share the screen. I'll just give my introduction and then I'll just start sharing. 1 minute मैम. रिचा मैम जस्ट काइंडली वहां पर एक वो होगा शेयर स्क्रीन के बगल में ऑप्शन, क्योंकि ये कॉलेज का है ना. आई नो एवरीथिंग एंड टुडे आई हैव स्पोकन टू हर, रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज स्टार्ट. वहां पर देखिएगा मल्टीपल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर होगा. रिचा मैम यू हैव गॉट? Yes, I'm trying to get. There is one option called screen. नहीं तो मैं फिर कॉलेज के सिस्टम से जुड़ के करूं. एक बार आप कर दीजिए क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गेट इन. मेरी बात सुनिए, ग्रीन कलर का जो शेयर स्क्रीन वाला होगा उसके बगल में देखिएगा डॉट विल बी देयर, एरो होगा, अपवर्ड एरो. शेयर स्क्रीन के उसमें होगा. मैम शुड आई मेक यू द को होस्ट? हाँ हाँ ऐसा भी कर सकते हो आप. कमलप्रीत मैम को मेक को होस्ट, देन शी विल डू. जस्ट चेक वंस बिफोर स्टार्टिंग ना. मेरे घर पे ना होने की बड़ी दिक्कत है. डन. Just minute. नहीं कर पा रही हूँ तो आप बताइए, मैं जाके पहले करूं फट से. बेटा इट्स नॉट अबाउट रिकॉर्डिंग. I think it's allowing now, ma'am. I think हो गया है. हो गया. हाँ जी. I'll just share it also straight away so that it's not a problem. Is the PPT visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Just a second. Just trying to Is it still visible to everyone? Yes, ma'am. All right. Okay. So I am here today to discuss with you all about a very integral step in the research procedure, which is called sampling. So we'll be discussing the various sampling techniques. Now, actually, sampling is by no means restricted to research only. All of us, in some way or the other, we use sampling from time to time, almost every day. How many of us, when going to an ice cream shop, we ask for a sample of a flavor before deciding which to eat? Or when we cook something, say rice, in the kitchen, we taste a small bite to see if it is cooked. Or even before deciding which movie or which show to watch on Netflix, we first check out its trailer. So the tester of ice cream, that spoon of rice, the trailer, these are all samples. Based on our experience of the sample, we draw inferences, we make conclusions about the entire thing. If the spoon of rice is cooked, we'll assume that the entire rice is cooked. If we enjoy the trailer, we'll assume that we will enjoy the movie too. This is exactly what we do in research also. Almost all research in the behavioral sciences, especially in psychology, is aimed at drawing inferences about a certain group using selected tools and measures. The specified group is known as the population,
and the selected number of persons is called sample. The generalized conclusions that we make are known as the statistical inferences. So it is very important that we know what basic terminology we are using. Only then we can understand the techniques and the methods. So what is population? The entire group, whichever specific group we want to do our research on, that entire group is called population. The number of people that we select from that population, that is called the sample. And this process of selecting a certain number of people from the entire population, that is called sampling. And the generalized conclusions that we make, they are called statistical inferences. So what is a population? A population may be defined as any identifiable, well-defined group of individuals, such as, we could take the population of adolescents or working mothers, college students like you all, etc. Now this population, it may be finite or it can be infinite. What is a finite population? A population where the number of members can be easily counted. For example, number of female teachers in your college, right? Now, what is an infinite population? An infinite population is one whose size is unlimited or very difficult to count. For example, how many fishes are there in a sea? So now we come to our main question. What is a sample? A sample is any number of persons selected to represent the population. The word represent here is very important, as you'll realize, the more we discuss this topic. In other words, what is a sample? A sample is a smaller representation of the larger population. Any measure which is based on the population is called a parameter. Any measure which is based on a sample is called a statistic. So if we are doing a research based with the entire population, then we call it a parameter. If we are doing research using a sample, then the measure that we are studying, that is called a statistic. Now, before moving on to the technique, yes. Ma'am, can you speak in Hindi? Of course I can. Sure, I can. So I'll just give you the basic definition again as well. Population क्या होता है? Population is जो भी हमारा aim है या whatever is the target of our research, तो उस research को जो लोगों से जो लोग उस research से affect होते हैं, वो हमारी population होती है. जैसे अगर मैं कोई adolescents के साथ research करना चाहूँ, तो entire adolescent population, entire adolescents, वो होगी मेरी population. अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने वाराणसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी पॉपुलेशन है, वाराणसी के सब स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन के अंडर आते हैं. पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन के साथ अगर मैं स्टडी करती हूँ और जो मेजर्स निकलते हैं उनको पैरामीटर कहते हैं. बट अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को ना स्टडी करके कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूं, उन्हीं पे अपनी रिसर्च करूं और ये अज्यूम कर लूं कि जो उनके साथ रिसर्च के रिजल्ट आए वही रिजल्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो जो कुछ स्टूडेंट्स मैंने सिलेक्ट किए वो सैंपल है, राइट? वो जो इन्फरेंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. Is that all right, Priya? This method is fine. It goes smoothly like this. Yes. All right. Thank you. Ma'am, what did you say about parameter or something? Right. Parameter and statistic. Parameter is any measure that is derived from the population. Statistic is any. अब अगर मैं population का mean, अगर मैं सारी population पे research करके mean calculate कर रही हूँ, वो parametric mean है, ठीक है? अगर मैं सिर्फ सैंपल में से, जो पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल निकाला, अगर मैं सिर्फ उनका मीन निकाल रही हूं, तो वो स्टैटिस्टिक है, वो स्टैटिस्टिकल मीन है, ठीक है? सो पैरामीटर इज अ मेजर ऑफ पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक इज अ मेजर ऑफ द सैंपल. नाउ आई वाज सेइंग दैट बिफोर मूविंग ऑन टू द टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी टर्म भी बहुत रिपीटेडली हम यूज करते हैं सैम्पलिंग थ्योरी में, सो वी शुड नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. In sampling theory, probability refers to relative frequency. In other words, based on previous experience, what are the chances of an event happening? किसी event के होने के कितने chance हैं, right? For example, simple example जो आपने स्कूल में maths में भी पढ़ा होगा in probability. In a series of coin tosses, the probability of getting a tail on a single toss is 0.5
or 50% or 1/2 of the total number of tosses. So in other words, if I'm making several tosses, 50% chance है कि tail आ सकता है, 50% chance है कि heads आ सकता है, because there are two options, right? So 1/2 is the probability. I'll use one more example, which is more suited to the kind of research we do in psychology. Agar say ki based on research, someone has concluded that the probability of students passing in your class is 0.9. This means that after your exam, probability is that 90% of you will pass. 0.9 अगर probability established है कि 0.9 probability है बच्चों के पास होने की, students के पास होने की, that means that in a general manner, 90% of the students will pass. Right? This is probability. Probability is not a definite number. It is an एक अंदाजा है कि keeping other parameters constant, keeping everything in mind, इतना chance है कि ये चीज हो सकती है. Right? That is probability. Now, based on this concept of probability, sampling methods can be divided into two categories. एक होती है probability sampling, एक होती है non-probability sampling. We'll take them up one by one briefly. What is probability sampling? Probability sampling methods are those that clearly specify the likelihood of inclusion of each individual in the sample. That means क्या मतलब है इसका कि जो probability sampling methods होते हैं वो ये guarantee करते हैं, specify करते हैं कि every individual in the population has a chance of being selected in the sample. कितना chance है? We'll discuss that when we are discussing the methods. ठीक है? So if the sampling method is specifying कि जो हर individual है population का उसका इतना chance है select होने का sample, that is a probability sampling. इसका उल्टा क्या है? When we are not sure, हमने ऐसा मेथड यूज किया जिससे हम गारंटी ले ही नहीं सकते कि all individuals have what chance of getting selected. That's a non-probability sample. Don't get hassled. Don't get confused. When we'll study the sampling techniques one by one, all this will keep getting much more clearer, and I'll keep using examples so that you can understand the concept. Probability sampling कहलाने के लिए, to come under the category of probability sampling, 3 conditions need to be fulfilled. 1, the size of the population from which the sample is to be taken must be known to the investigator. जो investigator है, जो researcher है, उनको पता होना चाहिए कि population का exact size क्या है. Exact does not mean right to the last count, right? But एक well informed idea होना चाहिए कि population कितनी है of that particular target group. Now, for example, if your class is the population, I would know the exact number of individuals. Or if I see participants of this lecture, I know the exact population. अगर आपके college के students भी देखने होंगे, that is also easy to find out. From your administrative block, I can take the information कि exact number of students कितने हैं आपके college, right? Second condition, each individual in the population must have an equal chance of being included in the sample. मतलब every person who is included in the sample, उनके select होने का equal chance होना चाहिए. That if Shrija, if there are 100 students here, ठीक है? तो each one of you will have an equal chance of being selected. If there are 100 students, Shrija का भी chance 1/100 है, Priya का भी chance 1/100 है, Nutan का भी chance 1/100 है. किसी का भी सिलेक्ट होने का दूसरे के ऊपर ज्यादा चांस नहीं है. Every individual has an equal chance of being selected. Select तो by chance होंगे, but everyone has an equal chance. कोई और variables मेरी selection को affect नहीं करेंगे. Third, the desired sample must be clearly specified. I should clearly specify कि मैंने कितना sample लेना है. So these 3 conditions are important अगर probability sampling के अंदर technique को आना है. 1, size of population should be known. Second, everyone should have an equal chance of getting selected. And third, the desired sample should be clearly specified. The main advantage of using probability sampling methods is that the obtained sample is considered to be representative of the population. That means कि जो sample है वो population को अच्छे से represent कर रहा है. जो population की image है वही sample की image निकल के आएगी. Therefore, any conclusions,
Any conclusions that I derive from the sample, they can be generalized to the population and applied to the entire population as well. However, since we are not studying the entire population, we are studying a sample only, there is always room for sampling error. Now, what is sampling error? First, let me just clarify this once again. कि क्योंकि मैंने equal chances सबका select होने का, तो मैं ये assume कर सकती हूँ कि जो मैंने sample select किया है, उसके भी वही characteristics होंगे जो population के characteristics हैं, right? But हम सारी population को नहीं study कर रहे हैं, so there is still a chance of sampling error. Probability में कम होता है, but होता है chance of sampling error. Right now, I'll just touch upon sampling error. सारी techniques करने के बाद we will discuss it once again. What is sampling error? Sampling error is simply the degree to which the sample characteristics vary from the population characteristics. जो फर्क रह जाता है sample का और population का, ठीक है? That is called sampling error. In other words, the amount of difference between the sample and population characteristics is sampling error, right? I have taken the sample from the population, but I am not studying the entire population. So there is a chance कि जो मेरी फाइंडिंग सैंपल में आई है वो शायद अगर मैं पूरी पॉपुलेशन स्टडी करूं उसकी फाइंडिंग से थोड़ी डिफरेंट हो. जो ये डिफरेंस है सैंपल की फाइंडिंग्स और टोटल पॉपुलेशन की फाइंडिंग्स को, इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर. द स्मॉलर द सैंपल, द ग्रेटर विल बी द सैम्पलिंग एरर. जितना हम बड़ा सैंपल लेंगे उतना सैम्पलिंग एरर छोटा होता है, राइट? व्हाट इज सैम्पलिंग एरर, व्हाट आर नॉन सैम्पलिंग एरर्स, वी विल डिस्कस in a little while after we discuss the techniques once. Sampling methods जो probability technique के अंडर आते हैं, they are simple random sampling, stratified random sampling और area or cluster sampling, which we will take up one by one. पहले let's discuss what is non-probability sampling. Non-probability sampling methods are those where there is no way of knowing, of assessing the probability of a sample being a true representation of the population. Non-probability sample कौन सा है? जहां हम गारंटी नहीं ले सकते कि जो सैंपल है वो वाकई में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं. इन दिस द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट बी श्योर दैट द सैंपल ड्रॉन विल ट्रूली मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्लास ऑफ 50, यू हैव अ क्लास ऑफ 50. मैंने क्या किया, मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रही हूँ. सबका इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का. जो जो आज प्रेजेंट है उनमें से मैंने 10 स्टूडेंट ले लिया. सो इंटायर 50 डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. दोज हु आर प्रेजेंट टुडे, उनका हायर चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, राइट? सो आई हैव चोजन 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 40 स्टूडेंट्स दैट वर प्रेजेंट टुडे. सो वो 40 स्टूडेंट्स का तो बराबर का चांस हो गया सिलेक्ट होने का, पर वो जो 10 एब्सेंट थे उनको सिलेक्ट कर, उनकी प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू दोज हु आर एब्सेंट. सो नाउ दीज 10 स्टूडेंट्स may not be truly representative of your class. All right, they will be those students maybe जो पास रहते हैं, उनके लिए आना आसान है, that is why they are not on leave, right? So there will be some other factor जो उनको बाकी population से vary कर सकते हैं. So the sampling methods that advantage of course of this method is कि ये non probability जितना specific, जितना sophisticated नहीं है, but practical, common, useful, applicable ये है. Probability sampling is ideal, but non-probability sampling is more practical. As we do the methods that come under it, you will keep understanding this more. So the sampling methods which fall under non-probability sampling are quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, snowball sampling, saturation sampling, dense sampling, which we will all do one by one. So to sum it up, to sum up the concept of probability, I can say that probability sampling is required when you want to make precise statements about a specific population on the basis of the results of your study. So although non-probability sampling is not as sophisticated or precise as probability sampling, it is definitely more common and useful in most circumstances, right? Jitna, you are all doing your masters now. Maybe some of you must have done thodi bahut research. Maybe, you've done some study with a teacher. You've done some form of research. Even the practicals that you do, they are also a manner of research only. Jaise with experience, you will see
that non-probability sampling is more applicable in practical situations, in practical life. Not to say that probability sampling is not possible at all. There are possibilities of that as well, but non-probability is more common. You can see a table in front of you जो differentiate कर रहा है between probability sampling, non-probability sampling. Probability sampling में sample is selected at random. Our next question is going to be about random. What is randomness? Non-probability sampling में जो subjective judgment है researcher का, उसके basis पे sample select होता है. In probability sampling, everyone has an equal chance of getting selected. Non-probability sampling, everyone does not have an equal chance of getting selected. Probability sampling is used when we want to control sampling bias. In non-probability sampling, even after being very careful, there is a chance of sampling bias. Probability sampling is more useful when population is diverse, when you really want your sample to be representative of the population. Non-probability sampling is used when the population is homogeneous, so it has similar traits. तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि हम सारे population में से निकालें, जो sample निकाल लिया उसको trust कर सकते हैं. Probability sampling is used to create an accurate sample. इसमें non-probability sampling में accurate Yes, I think I got disconnected for a minute there. Am I back now? Am I connected now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. All right. What was the last thing that you all heard? Ma'am, you were explaining the difference between parametric. Okay. All right. Difference between. I'll just cover. Had you all understood all the differences? Yes, ma'am. Okay, all right. Okay, so then फिर मुझे time पे पता लग गया. All right. Need for sampling. Now I was saying that why is sampling compulsory? That is the question. You must have done or you will do in your future lectures steps for research. और उस steps में sampling आता है. Can that step be skipped? Can sampling be skipped, or is sampling necessary for all research? The answer is that sampling may not always be necessary. There are three factors that determine whether or not sampling is to be done for a particular research or not. First factor is size of the population. If the size of the population is small or manageable, the researcher may decide to include all of the participants, the entire population in the study. So agar population ka size chota hai, manageable hai, then I don't have to take a sample. Then I can do the study on the entire population, and I can skip the step of sampling. If I'm doing a study on your class, my aim is of studying your class, and your class has 50 students, then I need not select a sample of 10 students or 20 students. But if the population is very large, if population is say of 50,000 or 1 lakh or say 1 million, then it will be more practical for me to work with a sample rather than assessing the entire population, right? Second is cost involved. If the researcher has the resources to include the entire population, then sampling need not be done. Again, same example,
50 students की class है, that is my entire population, that is what I have defined as population, but I only have the budget for 10 tests. So sample size तो ठीक है, but I do not have the resources. I do not have more than 10 tools. So then I am going to have to take a sample of 10 only. But if I do have the resources, I have, even if it's a large sample, say if it's a sample of 1,000 also, but I have assistants, I have the tests, I have the resources, I have time, I have money, then I can do it with the entire population. Then I don't have to do sampling. Third, convenience and accessibility of the individuals. Yes, size भी ठीक होगा, cost की resources भी मेरे पास है, but access नहीं है population. I don't have access to the population. Then also I will, to the entire population, then also I'll have to take a sample. For example, I go to my university in the holidays, and my class has 48 students or 49 students, and I want to do a study on the entire class. Sample size भी ठीक है, resources भी हैं, but कुछ students have gone home for the holidays. I don't have access to those students. So again, then I have to do my study on a sample only. I cannot do it on the entire population. I have no option but to follow a sampling technique. So these are the main three factors. Size of the population, छोटी population होगी तो पूरे पे कर लेंगे, sample निकालने की जरूरत नहीं है. Second, cost. If I have the resources to test the entire population, then I can do it with the full population. नहीं तो मुझे sample लेना पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगी सब पे. Third is convenience and accessibility. Population थोड़ी भी है, ज़्यादा भी है, cost है भी नहीं है, but access नहीं है. I don't have access to everyone. Convenient नहीं है मेरे लिए सारी population के साथ करना. Then also I will have to derive a sample. So these are the three factors that decide कि sampling करनी भी है कि नहीं. All right, since because we do it in the steps, you know, पहले research question form करना, hypothesis बनाना, sample derive करना. So sometimes we assume कि sample is a given. It is a compulsory process. It's not compulsory. In some cases, we can do away with this step as well. Now I'm coming to a very important word when it comes to research, when it comes to sampling. Whenever we talk of sample, we use the word random a lot. We use it very much. Students tend to use this word incorrectly a lot of times. जो हम random की definition English में समझते हैं या daily life में समझते हैं, हम research में भी वही definition use कर लेते हैं, which is incorrect. So many times, be that vivas or interactions or presentations, whenever I ask a student that how did you collect your sample? How did you select your sample? Data collection करने के लिए sample कैसे लिया था? Lot of times when I ask how, they say, ma'am, we just went to the canteen and randomly approached people to participate in the study. Because we just randomly approached people, so it is a randomized sample. This is not random sampling. Again, I want to clarify. बहुत बार हम बोलते हैं कि आपने कैसे sample select किया, तो स्टूडेंट्स आगे से ये कहते हैं कि मैम हम तो कॉलेज के गेट पे खड़े थे, या हम लॉन में कॉलेज का जो जहाँ पे सारे ब्रेक पे आते हैं हम वहां पे गए, हम रैंडमली अप्रोच कर करके हमने क्वेश्चनर फिल करवाया तो हमारा रैंडम सैंपल हो गया. दिस इज नॉट रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज आर्बिट्ररी सिलेक्शन, दिस इज नॉट रैंडम सिलेक्शन. व्हाई? रैंडम सिलेक्शन वो होता है where all individuals of the population have an equal chance of being selected. जो हम रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, रैंडम सैंपल वो होता है. दोज कैंटीन में जाके लोगे तो क्या हो रहा है, दोज हु वर हंग्री या जिनका ब्रेक टाइम था उनका चांस ज्यादा हो गया सिलेक्ट होने का, राइट? अगर आप कॉलेज के गेट पे खड़े होके कर रहे हो तो जो बाहर से आ रहे हैं उनका चांस ज्यादा हो गया सिलेक्ट करने का. जो हॉस्टल में रहते हैं वो तो आते ही नहीं उस तरफ, वो सिलेक्ट नहीं होंगे, राइट? सो दैट इज नॉट अ रैंडम सैंपल. Random sampling is one in which everyone has an equal chance of getting selected. So what are the methods of random selection? कौन सा मेथड जब हम फॉलो करते हैं then we can say कि हाँ हमने रैंडम सैंपल लिया. One is a fishbowl draw method. सबने कभी ना कभी गेम खेली होगी जहाँ सबके नाम की पर्चियां आप एक बर्तन में डालते हो और bowl you put slips of everybody's name and then you pick out a name and then जिसका भी नाम आता है you either tell them to sing a song or do some activity or something like that. In research as well, now suppose again 100 students is the population, or say even 1,000 students of the college is the population. So what I'm doing is
I'm writing everyone's roll number or name or whatever code I've given them. I'm putting the names on individual slips. I'm folding the slips and I'm putting them all in a bowl or in any container. And by being blindfolded and by not cheating in any manner, I pick up a name, I open the slip, and that person is selected in the sample, right? It's more like a lottery system. So this is a very simple method. It's called the fishbowl draw method. It can be very difficult if the population is very large. Because you can't put so many slips and manually keep picking out one by one. But otherwise, this is a true random selection. Isko true random selection bolte. Second is using the table of random numbers. Now, this is another easy and scientific method that may be used to select a random sample from a population. As in the previous method, you assign numbers to each member of the population. All right, जो आपके सामने ये जो random number table है, इसमें 100, इसमें double digit तक है, right? 100 तक है, from 1 to 100. So say my population has 100 people. सबको मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे करके number assign कर दिया, 100 numbers assign हुए. Now, instead of picking up their names from someone and selecting participants, what I'm doing is I'm using the table of random numbers and selecting participants whose numbers are mentioned in the table. Now, as you can see in the table of random numbers is one which consists of continuous rows, columns, sequence of numbers. Row columns mein number ka sequence hai. No number is appearing more frequently than the other. So I can decide that jinka bhi first row mein number aa raha hai, these are the participants that I'm going to select for my study. So I will select participant number 1, 97, 13, 34, 22, 7, 56, 49, 98, 27. This is going to be my sample. Or 1, 69, 24, 48. I can do this. This will also be a truly random sample. The advantage of using this method is that ऐसे random tables आपको बहुत easily मिल जाते हैं, online मिल जाते हैं, statistics की books में available होते हैं, जितनी आपकी population है उतने number का randomized table मिल जाता है. But again, it can become really cumbersome if the population is large. So if the population is say 10,000 or 20,000, then it can be difficult to use both fishbowl draw method and random numbers method. So then we come to the third method, which is computer determined randomness. In this method, data of population is fed into the computer and the computer is given the command to select randomly and the computer selects a random sample. This is very easy to use. Jitni marji large population ho jaye, computer can do it. Only disadvantage is that all researchers may not have access to the software or the equipment that is required for this. But it is a very basic software. In today's time, where technology has become so accessible, it is very easy to find such softwares. We do all our statistical statistics bhi softwares pe ho raha hai, Excel mein bhi karte hain, SPSS mein bhi karte hain, Statistica pe bhi karte hain. So similarly, access has increased, and this is a fairly error-free method of selecting a sample. I hope you've all understood what is randomization. And ये technique से जब हम select करते हैं ना sample, that is a truly random sample. ऐसे नहीं कि हम चलते जा रहे हैं और हमको कोई मिल गया, हमने select कर लिया तो वो random हो गया. That is not a random sample. I hope कि जो आज ये सुन रहे हैं, ये कभी भी अपने आगे जाके वाइवा में random word का गलत use नहीं करें. This is such a common mistake. This is such a common mistake that students are doing so frequently. Yes, Shrija, do you want to ask me something? You just raised your hand. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask that suppose we call out a random number, say 40. And if participant number 40 doesn't want to be a part of the study, so we choose 41 or 42. So is that also random sampling? Yes, you can put 40 back in. If you're doing the fishbowl draw method, you can put 40 back in and you can pick up another chit. If you're using a table of random number, you can substitute it with any other number, but that substitution also has to be random. So you can then go on to the next row or next column, और उसके साथ वाला जो number है, you can pick up that. Ma'am, and how is this random number table made? This random number table you get in a lot of statistical books. It is also a computer generated table only. But you will see a lot of statistical books के वो पीछे appendix बनी होती है ना, उसमें random number table होता है. And even online you can search that I need a random number table from 1 to 100. क्योंकि you can make it yourself also, ऐसी बात नहीं है. But what happens is there are certain inherent biases that we don't realize. And they can, come and we can make mistakes also. हम एक number को 2 बार लिख लेंगे.
या एक नंबर को 2 बार लिख लेंगे, दूसरे नंबर को 4 बार लिख लेंगे. We can make those errors. So it is better to go for tables that have been made for this purpose and refer to them. Right, Shrija? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. All right. Okay. So now that we've understood the concept of probability, we've understood the concept of randomization, what is sample, what is population, let's start with our techniques now. Okay. So first we'll be doing the probability techniques, then we'll come to the non-probability techniques. So सबसे पहली technique that we're going to do is a simple random sampling technique. Now, a simple random sample may be defined as one in which each and every individual of the population has an equal chance of being selected. श्रीजा, जो अभी आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ना, so and so doesn't want to participate, इसके रिलेटेड एक और बात भी है, वो मैं अभी इस मेथड में बताऊंगी आपको. So क्योंकि रैंडम है तो एवरीवन हैज टू हैव एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. सो सिंपल रैंडम सैंपल क्या होगा, जहां पे हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल रहे हैं एंड एवरीवन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड. नाउ इफ आई एम टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ से 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, 40 का सबका रोल नंबर लिख के या नाम लिख के या कोड असाइन करके, नंबर असाइन करके 40 चिट्स मैंने फिश बोल में डाल ली, एक बोल में डाल ली. Now, what is the chance of every student getting selected right now? There's one trial, one pickup, and there are 40 possibilities. So probability will be 1 by 40, correct? 1 by 40. Right. Now, अब क्या हो रहा है? There are 2 ways of doing this draw also. One is sampling with replacement. 2 is sampling without replacement. What does this mean? एक तो ये हुआ कि मैंने 40 के बॉल में से एक की पर्ची निकाली, ठीक है, से अक्षिता सिलेक्ट हो गई. अक्षिता का नाम मैंने लिख लिया, अक्षिता की पर्ची मैंने साइड में रख दी. अब कितने बच गए बोल में? 39, राइट? अब क्या प्रोबेबिलिटी हुई सबकी सिलेक्ट होने की? 1 by 39 होगी. तो अब तो चांस डिफरेंट हो गया. अक्षिता के लिए तो 1 by 40 था, पर अब बाकी सबके लिए 1 by 39 हो गया. दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है कि मैंने अक्षिता का नाम लिखा, बट देन आई पुट द स्लिप बैक इन द फिश बोल, और आई हैव एडेड अनदर नेम इन द फिश बोल, राइट? दिस वे एवरीवन हैज अ 1 by 40 चांस थ्रू आउट. पर्चियां टोटल में नहीं घटेंगी, सबका 1 by 40 चांस ही रहेगा probability of getting selected. This is why it was important to understand the concept of probability, to be able to understand this aspect, right? Now, like I'll repeat once again, simple random sample है, 40 बच्चों की क्लास है, मैंने random sample लेना है 10 का, तो मैंने आप सबका नाम एक फिश बोल में डाला या रैंडम नंबर टेबल ले लिया या कंप्यूटर से 10 सिलेक्ट करा लिए, and that is my random sample. Now, there are advantages of using a simple random sample. A simple random sample is regarded as a true representative of the population from which it was drawn. This is because in this sampling plan, all the individuals have an equal and independent chance of being included, right? Independent chance का क्या मतलब है? Independent chance का ये मतलब है कि अगर ऐसा श्रीजा सिलेक्ट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षिता नहीं होगी. कुछ आपस में रिलेशन नहीं है सिलेक्शन का, right? So everyone has an equal chance and independent chance of getting selected. Also, इसमें sampling error easily calculate हो जाता है, but it's not कि ये बिल्कुल ही bias से free है या error से free है, because we are not studying the entire population, we are studying a small portion of the population. So that is why sampling error की probability है. Again, जितनी छोटा सैंपल लेंगे पॉपुलेशन में से, उतना सैम्पलिंग एरर की प्रोबेबिलिटी हाई होती है. जितना बड़ा सैंपल लेंगे उतनी सैम्पलिंग एरर की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. यस सुनैना? मैम, जैसा कि अभी आपने बोला कि लेट्स अज्यूम कि 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से हमें पिक करना है, तो हमने एक बच्चे का पर्ची निकाला तो 39 बच्चे. तो मैम, जब पॉपुलेशन में ओनली 40 स्टूडेंट या 14 बच्चे ही हैं, तो एक एक्स्ट्रा नाम कहाँ से लेके आएंगे हम पर्ची डालने के लिए? Absolutely. That's a very valid question. This more or less can be done if I'm including another class or if you're taking a very large population.
all right, and you're taking a random sample from a certain portion of the population. इसको हम double sampling में you'll understand this concept कि population के बीच में population में से भी sample निकलते हैं, right? But it's a very valid question. एक extra नाम, if it is being added, if we are saying it as a replacement, then we are adding it from another similar population or another section, right? There was another hand that was raised right now. I'm sorry, but the name went away. Is there another question? Yes, ma'am. Shatabdi, yes. Yes. Ma'am, I want to ask about the replacement one, sampling with replacement. Yes. Can you please explain it again? All right, all right. It is, this replacement is only done to ensure 1/40 probability कि probability equal रहे, ठीक है? Not to say कि अगर हम replacement से, if we are doing sampling without replacement, तो it does not come under random sampling. ऐसी बात नहीं है, तो भी random sampling में आता है, right? But there are two techniques. Some researchers prefer to do sampling with replacement. Some prefer to do it without replacement. With replacement अगर कोई कर रहा है, तो उसका logic ये है कि जो numerical probability है, that they want to keep uniform across the sample, right? But not always in a random sampling do we do replacement. हर बार नहीं करते हैं. That does not compromise on the randomization of the sample. Numerical probability maintain करने के लिए sampling is done with replacement. Okay, Shatabdi? Yes, ma'am. Sunaina, your query was also answered? Yes, ma'am. All right. So there is another flaw also. इस random sampling में एक और flaw भी होता है. Because the sample selection is being done randomly, it is being done by chance. What happens कि अगर population में कुछ हिस्सा किसी category का कम है, there is a chance कि जो हमारे sample में वो select ही नहीं होगा कोई. What do I mean? Now say if it's a class of 40, okay? You have a class of 40, आपकी class में से, yours is a girls college, but for example, the university I teach is COVID. So I have a class of 40. Let me tell you, in my actual class, मेरी actual class में, there are only 4 boys. Rest all are girls. So it's a class of, I think it's a class of 46, and there are 4 boys, बाकी सब girls हैं. So अगर मैं random selection करती हूँ, it is quite possible कि मेरे final sample में कोई भी boy select नहीं होगा. है ना chance? Everyone agrees? Because that category of that population, that subcategory of that population is so small. हो सकता है जब मैं table of random numbers भी लूँ, चाहे chit निकालूँ, चाहे computer से करा लूँ, वो उनके miss होने का chance रहता है, क्योंकि वो बहुत कम number में है as compared to the rest of girls के हिसाब से boys बहुत कम है, so miss हो सकते हैं. Then what do we do in this? इसमें क्या करते हैं? इस कमी को पूरा करने के लिए, ये जो है ना कि एक strata population का छूट जाएगा अगर हम simple random sampling करते हैं. To overcome this limitation, we can use the next technique, which is stratified random sampling. So this is not simple random sampling. This is stratified random sampling. Yes, Anshika? Such pretty names you all have. Yes, Anshika? My question was that if we add another name, and what if that name gets selected? So the entire sampling will change according to that name selection. And if we don't add another name, and we slip back the same name sheet which was earlier selected, then there's a chance, 1/40 chance of that name also getting selected again. Yes. So when that repeat happens, no, जो ये हो रहा है ना, that replacement can be done by an empty slip also. And if that same person gets selected again, you put the chit back in. You don't select that person again. Even in table, sometimes even in table of random numbers, the number can come repeatedly. But because you choose, या तो आप row choose करोगे या आप column choose करोगे, diagonal नहीं कर सकते. Table of random numbers में से आप diagonal select नहीं कर सकते, जैसे हम bingo में खेलते हैं. So you have to either choose one way or the other way. And in sampling with replacement, even empty chits can be used. When they come out, they are put back in. So, focus on the word that I was using. Numerical probability uniform रखने के लिए ये किया जाता है. This is done to keep numerical probability uniform. अब जैसे coin toss ले लो आप, ठीक है? Take the example of coin toss. What am I saying कि अगर मैं 10 times coin toss करती हूँ,
तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 टाइम्स हेड आ सकता है, 5 टाइम्स टेल आ सकता है, करेक्ट? जब मैं वाकई में कॉइन टॉस करती हूँ तो क्या वाकई में 5 टाइम्स टेल आता है, 5 टाइम हेड आता है? आ भी सकता है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ऑल 10 टाइम्स टेल आए। चांस तो हर बार था ना कि 50% चांस है कि या टेल आएगा या हेड आएगा, राइट? Chance, numerical probability at every selection. Are you understanding what I'm saying? Numerical probability, theoretical probability is कि इस coin toss में 50% चांस है कि हेड आएगा, पर टेल आ गया। अगले वाले में क्योंकि हेड और टेल दोनों मौजूद हैं, दोनों का फिर से 50% चांस है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, फिर से टेल आ गया। तीसरी बार में वो रिप्लेसमेंट वही है, हेड वही है, कौन से हेड तो कहीं जा नहीं रहा है ना, हेड आया, फिर से हेड आ गया, आ सकता है ना। बट न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी तो हर बार यही है कि या 50% हेड आएगा या 50% टेल आएगा। इसको गैम्बलर्स फैलेसी भी कहते हैं। गैम्बलर्स फैलेसी के बारे में सुना आप लोगों ने? गैम्बलर्स फैलेसी में क्या होता है? गैम्बलिंग, यू नो गैम्बलिंग, राइट? कि आप कोई मशीन यूज कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो या कार्ड्स खेल रहे हो। जब कोई गैम्बलर बार बार हारता है, सो दे फील, ये गैम्बलर्स फैलेसी क्या होती है, वो ये रैशनल लगाते हैं कि अब मैं इतनी बार हार गया ना, अब तो जरूर जीतूंगा, इतनी बार इस मशीन में मेरा नंबर नहीं आएगा, इस बार पक्का आएगा, हर बार ही थोड़ी मैं हारूंगा, अब तो प्रोबेबिलिटी होगी कि अब मैं जीतूंगा। इसको गैम्बलर्स फैलेसी बोलते हैं। एंड they keep losing. Gambling is also on probability, on chance, by luck, right? अब अगर हम कहते हैं कि हर बंदे का एक्सीडेंट में चांस टू पास अवे और टू डाई इन एक्सीडेंट इज 1/500, स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि ऑफ यू डाइंग इन एन एक्सीडेंट, गॉड फॉरबिड, टच वुड, बट किसी का भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने का चांसेस 1/500। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि every 500th person will meet with an accident, right? But everybody has that numerical probability. फिर अगर ये probability predict ही नहीं कर सकती तो हम probability क्यों यूज करते हैं, right? If probability can't predict only on every toys, तो probability का फायदा क्या है? Probability is to be able to formulate, to be able to practice in such a way that we know how much risk we are supposed to take. जैसे अब जब कोविड की वैक्सीन आई थी शुरू में, lot of people said 1 in 10,000 probability है कि इस वैक्सीनेशन से कोई ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, 1 in 10,000 possibility है. So people are like, oh, 1 in 10,000 possibility, I will not take the vaccination. Then this statistic I read, but there is 1/500 possibility of dying in car accident also. But do we not travel in cars? We do. So the chances to know कि कितना चांस है उस चीज के अकरेंस का, 1/10,000 अगर चांस है, that means it is rare. It is a rare chance to happen. But 10,000 लोगों में से कई लोगों को हो सकता है, जरूरी नहीं है 10,000 में से 1 कोई होगा, right अंशिका? Numerical probability का concept. Do you understand it now? Yes, ma'am. Thank you. Okay, all right. So, moving on. अब हमने बोला कि रैंडम सैम्पलिंग में अगर कोई सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो बहुत कम है, रैंडम सैम्पलिंग में मिस हो सकते हैं, उसमें they will not be selected in the sample. It is a chance. Then we use stratified random sampling. Now, what is stratified random sampling? In stratified random sampling, first the population is divided into strata. जो भी हमारा intention है strata का, अगर मेल फीमेल है तो we'll divide them into male female. It can be based on single criteria, just gender, male or female, or it can be divided into multiple criteria. जैसे मैं ले लूं कि graduation और gender. So 4 strata बन जाएंगे, male graduate, male undergraduate, female graduate, female undergraduate, 4 strata बन जाएंगे, right? So किसी भी criteria जो हमारे research के साथ related है, we can divide the population first into strata. Then from every strata we do random selection, जो simple random sampling में जैसे कर, ठीक है? From every subpopulation we will select a random sample. So after dividing the population into subpopulation, from every population we will select a random sample. Such stratification, it has 2 benefits. One, the sample becomes even more representative of the population, but a sampling error का chance वो और भी कम हो जाता है. It also makes it convenient. Sampling, क्योंकि populations को हम divide कर लेते हैं सब samples में, थोड़ा easy हो जाता है researcher के लिए. It becomes supervision easy हो जाता है, data collection easy हो जाता है, questionnaire administration करना थोड़ा easy हो जाता है rather than
सैंपल, इंटायर सैंपल। पर ये भी 2 टाइप्स की होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. One is proportionate stratified random sampling. One is disproportionate stratified random sampling. What does this mean now? Now say, जो मेरी क्लास मैंने आपको बताई कि उसमें 4 बॉयज है, 42 नहीं है. और let's take an easier example. Say I have a class of say 100. उसमें 50% गर्ल्स है, 50% बॉयज है. ठीक है. सो जो मैं सैंपल सिलेक्ट कर रही हूं, मैं उसमें भी 50% गर्ल्स और 50% बॉयज ही लूंगी. Say if I say there are 100, let me give you another example to understand proportion. 50-50 तो proportionate लगता है. What is proportionate stratified random sampling? क्लास है मेरी 100 बच्चों की, 100 में से 80 बॉयज है, 20 गर्ल्स है. रेशियो क्या हो गया? 8:2, राइट? नाउ इफ जो मैं सैंपल सिलेक्ट कर रही हूं उसमें भी, if I'm selecting a sample of 10 out of that sample of 100, उसमें भी मैंने बॉयज और 2 गर्ल्स की रेशियो 8:2 ही रखनी है. मैं 8 बॉयज सिलेक्ट करूंगी और 2 गर्ल्स सिलेक्ट करूंगी. दिस इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. मतलब पॉपुलेशन में जिस प्रोपोर्शन में स्ट्राटा एग्जिस्ट करता है, मेरी सैंपल में भी वो स्ट्राटा उसी प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करेगा. व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? In this, I'm not seeing the proportion of the population. चाहे मेरी क्लास में 4 लड़के और 42 गर्ल्स है, पर मैं 2 लड़के और 2 लड़कियां ले रही हूँ अपने सैंपल. आई एम टेकिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फॉर माई सैंपल. सो मेरे सैंपल में जो प्रोपोर्शन है, इट इज नॉट द सेम एज इज द प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन. ठीक है. ये जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, चाहे वो प्रोपोर्शनेट है चाहे डिस्प्रोपोर्शनेट है, this is very important and very useful, especially if you're studying education system, school system, administrative services, जहां पे strata exist करते हैं. जिस population, जो population heterogeneous है, the population where strata does exist, वहां पे we must prefer stratified random sampling over simple random sampling. The benefit of this kind of sampling is that it increases the representativeness of the sample. It is strengthened. The representativeness of the sample is strengthened because of the fact that all elements that are existing in the population, they are in some way or the other part of your sample, right? Also, sampling error is also minimized, like I mentioned earlier. However, proportionate stratified sampling is a very difficult method when it comes to practical application. You know, this method assumes कि रिसर्चर को पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है. ओनली एंड ओनली इफ यू नो एक्यूरेटली अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, तो ही आप वो प्रोपोर्शन को, मुझे अपनी क्लास में पक्का पता है ना कि 4 बॉयज 42 गर्ल्स हैं, बट इफ आई एम टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोपोर्शन, आई कैन मेक अ बिग मिस्टेक इन दैट. सो the assumption that the researcher knows the composition of the population, that assumption needs to be taken seriously. Also, it's time consuming. पहले आप सब populations में divide करते हो, फिर निकालते हो sample, and then you're doing your entire research. Also, we sometimes can make classification errors. There can be many stratas, but we are not classifying all stratas, or we are classifying, अब जैसे gender, it's easy to understand male, female, but इसमें भी classification errors हो सकते हैं, right? There may be a transgender population that we are classifying wrong. There may be someone who biologically the gender is female, but psychologically they do not identify with the female gender, right? So such kind of classification errors the researcher has to be very careful about if they are doing stratified random sampling. Disproportionate, I have explained to you that the proportion is not as same as the sample. Disproportionate is slightly easier than proportionate, क्योंकि हम ये assume नहीं कर रहे कि जो population में strata की proportion है वही हमारे sample में भी proportion होगा. So we don't assume that. बट इतना अज्यूम कर रहे हैं, इतना गारंटी कर रहे हैं कि सारे स्ट्रैटा हैं. प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा, पर स्ट्रैटा सारे हैं. इसमें भी वही आ गया, स्ट्रैटा की नॉलेज होनी चाहिए. यू हैव टू नो व्हिच सब पॉपुलेशंस आर प्रेजेंट, ओनली देन यू कैन डू. ऑलराइट. इन स्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशंस, stratified random sampling is quite popular and conveniently used when it comes to random sampling.
There's another thing. When we are dividing the population into strata or into subpopulation, we should be very careful that जो हम stratification use कर रहे हैं, that is relevant to the study. Now, for example, I want to conduct a study about political attitudes. I want to see कि जो मेरी population है, इसका political attitude किस तरफ जा रहा है. What strata should I use? What strata is relevant to my study? I can use age, because age can affect political attitudes. I can use gender. I can use education. All of these factors can affect my study. So I can use that as strata. But will I use body weight, height, color eye? Should I use these as strata? No, because these strata are not relevant to my study. So when we are dividing into subpopulations, we must divide on criteria that actually is relevant to the study, not on irrelevant criteria. Yes, do we have a question? Yes, Akansha? Nothing, ma'am. Okay, all right. Okay. Now, after simple random sampling and stratified random sampling, we have the final technique which I have taken in probability sampling, which is area or cluster sampling. Now, area or cluster sampling is another important method of probability sampling. This sampling method has its origin in the agriculture method. Farming experiments that are usually conducted, they to see the effect of fertilizer on soil or soil treatment on the quality of soil or variety of planting methods, crop yield, they mostly use this kind of sampling, which is area or cluster sampling. In social sciences, application of area sampling is very extensive, in survey research especially. In survey research, area or cluster sampling, or in field research, area or cluster sampling is done very frequently. In area or cluster sampling, what happens is sampling in area or cluster sampling, generally geographical divisions of territory, community, neighborhood, cities, states, etc. Some kind of geographical division is done on a map, and a certain number of them is drawn. Areas banate hain, areas ko randomly select karte hain, not selecting the population or the people randomly. We divide a geographical territory into areas. It could be locality, it could be cities, it could be districts. Then we select randomly kaun se area ko cover karna hai, right? So the investigator or the interviewer then proceeds to interview individuals or take survey from individuals in those randomly selected areas or clusters. All right. Now suppose I want to assess the attitude of the people of Punjab towards, say, COVID vaccination. What is the attitude of people of Punjab towards COVID vaccination? So for this, what will be convenient for me? Ki I can't go all over Punjab. Main sab jagah nahi ja sakti. I have resources, but I can only go to limited places. So what can I do? I can take a map of Punjab and divide it into various sections. Agar koi Punjab mein se, so they know Malwa region hota hai, hamara Doaba region hota hai, nahi to districts mein bhi divide kar sakte hain. Using a random technique, then I will select some districts. Then I will conduct my survey or take my data from only those districts and not from all of Punjab. In area cluster sampling, further subdivision can also happen. You know, selection of samples can be done randomly at separate stages also. इसको multi-stage sampling कहते हैं. पहले area को randomly select कर लिया, फिर उस area में से sample को भी randomly select कर लिया. इसको multi-stage sampling बोलते हैं. You know, we're doing sampling at different stages, different steps. So like I said, there is wide application of this technique, especially when we want to do some large scale survey on political, religious or social beliefs or social behavior. Then we do this kind of sampling. Or, you know, where somehow list of specific individuals are unobtainable or inaccessible, or area sampling becomes a more easier sampling method than other kinds. So it is easier in the sense that we don't have to have a list of all the people of Punjab. Right? We just coming to you, Sonali, I'll just finish this part. But while it may save time and money, area sampling does save time and money, because now I'm not covering all of Punjab. I'm only covering certain areas of Punjab. Substitutes can also, you know, respondents can be easily substituted in this. I can do sampling, say random sampling, I can do. All of that is there. It's very flexible. It's a very flexible technique. But there are some major disadvantages also. Sampling error can be very high in area cluster sampling as compared to जो हमारे जो पिछले दो मेथड थे,
उनके कंपैरिजन में इसमें सैम्पलिंग एरर हाई हो सकता है, क्योंकि अगर से आई एम टेकिंग सर्टेन एरियाज ऑफ पंजाब, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो उस एरिया के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाकी एरिया के दूसरे एरिया के लोगों के साथ मैच नहीं करेगा. इट इज क्वाइट पॉसिबल. तो सैम्पलिंग एरर मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस होने के चांसेस हैं. ऑल्सो जरूरी नहीं है कि जो हमने एरियाज डिवाइड किया वो इक्वल होंगे. सम एरिया में भी हेवीली पॉपुलेटेड, सम एरिया में भी लाइटली पॉपुलेटेड. इतना कंट्रोल की एरिया भी एग्जैक्ट हो, पॉपुलेशन भी उस एरिया में सबकी सेम सिमिलर सी रह रही हो. this much control we can't have, researcher can't have over area or cluster division. So this can introduce bias in the sample. Rural में से ज्यादा area select हो गए, urban select नहीं हुए ज्यादा, उसमें फिर आ जाएगा sampling error हो जाएगा, right? So there is a scope for sampling error in this technique, which is very high. We had a question. Who had a question? Yes, ma'am. Ma'am, actually I had a question. कि मैम जैसे आपने बताया है कि इसमें हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कोई एरिया, मैम ये वाला रैंडम अब इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस वाला रैंडम होगा या फिर मैम जो आर्बिट्ररली? हाँ, गुड क्वेश्चन. Whenever I am using the word random, I am using it for true random. I will not use it for arbitrary. I will never use the word random for arbitrary. इसमें हम एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग को रैंडमली करते हैं. उस एरिया के अंदर जो इंडिविजुअल्स करते हैं वो रैंडम नहीं करते हैं. अगर हम वो उस एरिया के अंदर इंडिविजुअल्स को भी रैंडम सिलेक्ट करें फिर वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गई. एरिया इज if I have divided Punjab into 100 clusters, I am selecting 50 clusters randomly through either fishbowl method, random method, or table of random numbers or computerized. 50 एरियाज में से जब मैं सर्वे करने जा रही हूँ या इंटरव्यू करने जा रही हूँ या डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ, then I'm not doing it randomly, right? If I'm doing it randomly, then it is multi-stage sampling, right? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Ma'am. Good question. That was a very good question. Ma'am. So, in terms, yes, Shrija? Ma'am, I don't understand how is this even called probability sampling and yes, everyone has a fair chance of selection. Yes. In here, that is why it is called area or cluster sampling. Probability of every area getting selected is equal and independent. That makes sense, Shrija? It's called area and cluster sampling. Area या cluster, अगर मैंने 100 हिस्सों में divide किया है पंजाब को, तो हर हिस्से का select होने का equal chance है. And like I said, this kind of sampling is mostly used in survey methods where large scale data is supposed to be collected. Right, Shrija? Yes, ma'am. Yes, but क्योंकि हम एरिया में से नीचे आके नहीं रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, that is why सैम्पलिंग एरर हाई है इसमें, right? Yes, सलोनी? Yes, ma'am. I'm asking that हमने जो एरिया है वो रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हम उस एरिया में से जाकर अगर कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे हैं तो भी क्या हमारी सैम्पलिंग फिर रैंडम ही रहेगी, मैम? Yes, so our sampling is random in the selection of area. तभी सैम्पलिंग एरर हाई है. कंट्रोल भी नहीं है हमारा क्लस्टर के साइज पे. कोई क्लस्टर बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा based on the number of people who are living there. That is why this is the disadvantage. So इसको हम probability sampling में डाल रहे हैं because जो first step है वो randomized है. But if we'll call it multi-stage sampling, then it is purely probability sampling. But we are only selecting the area of cluster randomly, and it is assumed. You know, we take this assumption कि हमने एरिया रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, सो वी कैन टेक दैट लेवरेज दैट वी आर नॉट डूइंग रैंडम सैम्पलिंग, बट क्योंकि ये हो रहा है दैट इज व्हाई सैम्पलिंग एरर इज हाई, व्हिच इज स्पेसिफाइड. अगर कोई रिसर्चर एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग ले रहा है, कर रहा है, सिलेक्ट किया उन्होंने कि मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ, दे आर अवेयर दैट ये सोर्सेज ऑफ एरर हाई है मेरे इस टेक्निक में. बट जब हमने लार्ज स्केल व्यू पॉइंट लेना हो, पॉलिटिकल एटीट्यूड देखना हो, या लार्ज स्केल सर्वे, जैसे अब यू सी ये पॉपुलेशन सर्वेज होते हैं, राइट? पॉपुलेशन सर्वेज होते हैं. Every time population survey happens, has a researcher come to your house and asked you how many people are living in your house, how many people are educated, how many are not? नहीं ना, हर बार तो नहीं आते. मुझे तो लगता है मेरे घर पे आज तक कभी भी नहीं आए, मेरा कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ उसमें.
बट स्टिल क्लस्टर डिवाइड होता है, अगर क्लस्टर रैंडम सैंपल होता है, देयर इज स्टिल अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एज कंपेयर्ड टू completely non-random selection. Yes, ma'am. Thank you so much. All right. And so now, after these were our probability sampling techniques, now we'll come to our non-probability sampling techniques. When you'll move on, you know, in your research journey, in your journey of education, you'll see that we tend to be biased towards, we tend to use our non-probability sampling techniques much more. First is quota sampling. Quota sampling is very similar to stratified random sampling. Stratified technique is same, बस random selection नहीं है, ठीक है? So in quota sampling, it's one of the very important techniques of non-probability sampling, similar to, like I said, stratified random sampling. In quota sampling, investigator recognizes the different strata of population, and from each strata, he selects number of individuals arbitrarily, not randomly, ठीक है? Strata तो define कर लिया, male है, female है, पर रैंडम सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन आर्बिट्ररी हो रहा है. जैसे इन माय क्लास 4 बॉयज 42 गर्ल्स, बट मैं वो 4 बॉयज को रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी मर्जी से आई हैव टेकन 2 बॉयज, और जो 2 बॉयज उस दिन प्रेजेंट थे मैंने वो दोनों ले लिए, ठीक है? सो मैंने रैंडम सिलेक्शन नहीं किया, आर्बिट्ररी सिलेक्शन किया है, पर स्ट्रैटा डिफाइन किया जैसे स्ट्रैटिफाइड में होते हैं, राइट? नाउ सपोज I want to do an investigation with the entire population, and I'm taking 3 socio-economic status, 3 divisions, high class, middle class, and low class based on income. Okay, so ये मेरा stratification बिल्कुल सही है. I have taken correct stratification. I have taken 3 socio-economic classes. Now, इसमें proportion नहीं होगा, इसमें proportion करना भी मुश्किल है, और अगर करेंगे भी random नहीं कर रहे. I'm not selecting high class from all the high class people that are present. I'm just randomly selecting either the first 10 high class people that I come across, or you know, those who are in my known circle, whatever, but I'm not doing random sampling. So strata, subdivision, subpopulation वैसे ही कर रहे हैं जो stratified random sampling में हो रही है, but selection within the substrata is not happening randomly, it is happening arbitrarily. So it is obvious that they are similar. Stratified and quota sampling is similar. Proportionate भी कर सकते हैं quota sampling में, अगर करना चाहो, that can also happen. उसमें भी proportionate disproportionate होता है, इसमें भी दोनों कर सकते हैं. But here we are not selecting randomly. Random selection is in stratified random sampling. In quota sampling, there is no, यही difference है बस quota sampling और stratified random sampling में. Selection of participants is not random. So quota sampling has many advantages. It's very quick. It is quite satisfactory also in terms of results. Convenient है, less costly है as compared to other methods, and it ensures कि जो different strata exist कर रहे हैं वो सारे include हो जाए sampling. ठीक है? Individual का सबका chance होना हो, strata जरूर सारे आ जाएंगे population में. But of course it has its disadvantages also. Main disadvantage which you will find in all non-probability is due to lack of random selection. So because there is no randomness, it is possible कि representative ना हो पूरी तरह से sample of the exact population. जब truly representative नहीं होगा तो external validation या generalizability, that becomes difficult to achieve. Also, in quota sampling, researchers tend to take people or participants जो accessible हैं, who are easily accessible. So, जो मेरे लिए easily accessible है, they may not be typical of the entire population, right? And it is amenable to classification error, जो stratified में भी था. मैं classification ही गलत करूँ, मेरी strata की understanding ही गलत हो, then quota sampling will be full of flaws and the findings will be compromised. I may be ignorant of many variables, many important strata. If I am ignorant और मैं quota sampling कर रही हूँ तो then my जो implication है मेरी finding की, that will suffer. हम usually quota sampling में, yes Shivani is coming, last point, quota sampling में usually we control maybe 1 criteria, 2 criteria. जैसे अब मैंने SES का बोला तो मैंने class control कर लिया, but I may not be able to control all. मैं gender नहीं control कर पाऊंगी, education नहीं control कर रही हूँ, right? I am controlling class, वो मैंने देख लिया, उसके strata बना लिए, पर जो बाकी सारे variables हैं उनका मैंने strata नहीं बनाया. So dependability then of the results suffers because of that.
In spite of this, popular method with researchers very frequently used. Yes, Shivani? मैम am I audible? Yes, yes. मैम जैसे हम इंटरनेट पे सर्वे सर्कुलेट करते हैं अगर पार्टिसिपेंट को करने के लिए, तो वो आर्बिट्ररी मेथड के अंदर आता है ना? Yes, yes. ओके मैम, थैंक यू. क्योंकि only those who have access to your survey से वही सिलेक्ट हो रहे हैं. टोटल पॉपुलेशन में से जिसने लॉग इन नहीं किया या जिस तक आपका सर्वे नहीं पहुंचा, उनको तो चांस ही नहीं है सिलेक्ट होने का, राइट? यस मैम, या जिनके पास इंटरनेट नहीं है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. या जो if they are temporarily हम आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में गए हुए हैं, उनको एक्सेस नहीं होगा. सो लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स कैन इफेक्ट, राइट? यस स्वाति? मैम स्ट्राटा और क्लस्टर में क्या डिफरेंस है? क्लस्टर इज फिजिकल एरिया. स्ट्राटा इज सब कैटेगरीज इन पॉपुलेशन. क्लस्टर सैम्पलिंग में फिजिकल एरिया जो होता है ना, जैसे लोकेलिटी ले ली या डिस्ट्रिक्ट ले लिया, कम्युनिटी एरिया ले लिया, राइट? स्ट्राटा इज सब कैटेगरीज इन द पॉपुलेशन. ओके, यस कौशिकी? मैम Kaushiki, your voice is breaking. Okay, Kaushiki, maybe in the due course, if your internet connection gets better, we can take your question. Or once when I close the PPT, maybe in the chat box, I can have your question. With the PPT, I'm not able to access the chat box. You just write in chat box, Kaushiki. I'll read it for you. Thank you. We'll take it up in the end. I'll take it up in the end. Yeah, all right. sure. Okay. Thank you, Meenakshi ma'am. Okay. Now, the next sampling technique, we'll move on to the next sampling technique, which is purposive sampling. Now, purposive sampling is a kind of non-probability sampling technique, which is based on the typicality of the cases to be included in the sample. जो investigator है, the investigator has some belief that the sample being handpicked is typical of the population और is a very good representative of the population. मतलब मेरा judgment है कि जो मैं sample select कर रही हूँ, ये population को अच्छे से represent कर लेंगे. This is called, it's also called judgmental sampling. This is called purposive sampling. I feel कि मैं ये जो लोग हैं ना, जो मैंने ये स्टडी करना है, ये जो लोग हैं ना, ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेंगे पॉपुलेशन को. मेरा पर्पस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. So this is purposive sampling. Like I said, it is also called judgmental sampling because investigator on the basis of his impression, his judgment, they are selecting the concerned sample. Now, for example, if I want to see, which technique is best for online teaching or for online creativity, I can select some students who have taken the online classes very regularly and teachers जिन्होंने online classes में पढ़ाया, जिन्होंने regularly पढ़ाया, and I feel that because they have used this very well, इनका मुझे पता है, इन्होंने online classes भी लगाई हैं, classes ली भी हैं, तो I will take them as the sample, क्योंकि जो मैं find out करना चाहती हूँ, what do I want to find out? कि online classes के लिए कौन सी technique अच्छी है. तो जो लोग मुझे लगता है कि हाँ ये सही से बता पाएंगे, इनको मैं ले लेती हूँ. जो इनके रिजल्ट्स आएंगे वो वाकई एप्लीकेबल होंगे, वो वाकई सही होंगे. So this is my judgment or my understanding of the purpose of my sample selection. Now अब इसकी advantages है purposive sampling की. कोई random selection process नहीं है, पर it's less costly, it's convenient for the researcher. It guarantees अगर मेरा judgment सही है, my understanding, my definition of my purpose, my judgment, if it is a well-informed judgment, if it is a good judgment, then that population will truly serve the purpose जो शायद कोई random population भी कर ले, right? So if it's relevant, if my research design allows me that understanding of the sample and allows me that room to make judgment of the sample, then I can go in for purposive sampling. It can actually be a very good method. But of course,
And we can't hear you. I think ma'am has got disconnected. She will Just be wait for a joining while, us with beta. Just wait for a while. Yes. Haan, Yes, I got she's it here. disconnected again. Okay. I don't know, the Wi-Fi just decides, I don't know, it gets tired of listening to me, I think. It just No, it decides to go happens. away. It happens. Yeah. Yes. Just a second, I'll share it again. Yes, so I was saying कि purposive sampling का ना सारा करता धरता is the investigator. There is so much that is reliant on the understanding of the investigator. मेरी अगर जजमेंट सही होगी तो मेरा सैंपल बहुत अच्छा बन जाएगा, बड़ी अच्छी जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स आ जाएंगी. अगर मेरी जजमेंट गलत है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन गलत है, then the findings will not be valid for anyone else apart from my sample. So that is the thing. So inferential statistics हम legitimately नहीं use कर सकते with purposive sampling, but still there is a certain assumption that, you know, that if I have understood my research problem well, then purposive sampling can actually be a beneficial method of sampling, जबकि मैं random नहीं कर पा रही हूँ, then I can go ahead with this. Another popular sampling technique is incidental sampling. ये तो हमने बहुत यूज किया, सब ज्यादातर ये यूज, तो इंसिडेंटल सैम्पलिंग कह देते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कह लेते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कह लेते हैं, वेरी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स, ओवरलैपिंग टर्म्स used interchangeably with each other. Incidental sampling is a sampling procedure in which the investigator selects the person according to his convenience. Simple. It's a very crude method of sampling. Very little generalizability we can give. Generalizability. Dr. Prithu, आपका माइक ऑन हो गया है, if you can please. Yes, Saloni, do you want to ask me something? I wanted to ask, जो आप arbitrary selection बोल रहे थे, क्या वो convenient sampling ही mean कर रहा था? सारी ही जो non probability techniques है, उसमें सब में arbitrary selection होती है. All non probability techniques have arbitrary selection. Someone's mic is on. I think it's Sohi. Can you turn off your mic, please? Yes, thank you. So, Saloni, sampling या तो random होगी या arbitrary होगी. Even अगर मैं purposive भी बोल रही हूँ, उसमें भी arbitrary nature है, random नहीं है. Okay, Saloni? Yes, ma'am. Got it. Thank you, ma'am. So, पर सबसे crude तो यही है. सबसे ज़्यादा arbitrary convenience sampling ही है. As in, if I want to, you know, do a study with female students, because I know Meenakshi ma'am, I'll tell Meenakshi ma'am, देखो आपकी class में, you know, you have female students, very intelligent girls also asking me nice questions. Seriously participate करेंगे, please let me do the study with your class. ठीक है? तो मैंने आप सबको ले लिया, तो मैं arbitrarily select कर लिया, but किया किससे? Convenience से, because it was convenient for me, right? So I have not seen the exact purpose. मैंने अपने variable तो select किए हैं, मुझे female चाहिए, students चाहिए, से psychology के students चाहिए, social science के variables तो लिए हैं, but purely out of convenience I have done, which is what we mostly do in our researches. अगर हम किसी कॉलेज में भी डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, we go to a college जो easily accessible है, या हमारी सिटी में है, या जहाँ के टीचर्स को हम जानते हैं कि वहाँ पे easily सैंपल इकट्ठा हो जाएगा, या अगर आप भी करते हो अपने प्रैक्टिकल्स में तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो क्योंकि वो मान लेंगे, they'll participate in the study, right? It is the main advantage is that it is the most convenient form of sampling. It saves money, time, labor, everything it saves. Just a second, Shrija. But disadvantage भी बहुत है, बहुत heavy disadvantages हैं. With confidence, we cannot generalize the results because sample may absolutely not be representative of the true population. बहुत bias हो सकता है. The sample can be extremely biased in this kind of selection. Not a very dependable sample. Sampling error ka chance is also very high. Validity, reliability of the study is very high. In spite of this, in most practice, we use this, which is what is the question I'm expecting. Yes, Shrija. Ma'am, I want to ask that suppose I create a Google form and that is why I'm conducting a survey kind of, and then I upload it on social media for people to fill the form.
So what kind of sampling will that be? So the people who fill first will be a part of my sample. What do you think? Is it accidental sampling? Yes, it is. It is incidental sampling or accidental sampling. Even that, what I said, कि हम canteen में जाके कर ले, that is also incidental sampling or convenience sampling. It's also the same thing. When the person is getting selected accidentally or incidentally, right? Or as per your convenience, it is this kind of sampling. And why you readily think of examples of this kind of sampling? Because this is the most frequently used type of sampling. Right? Shrija? है ना? That's true, right? इसके Yes, example easily आते हैं mind को because this is the most well-known kind of sampling that we use. In fact, I think that in recent times, I have come across any research which is not using convenience sampling. So until unless बहुत वो strata को देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, until unless वो कुछ they're dealing with some kind of strata or quota in their variable, mostly all researchers are using this. Yes, Rinku? So, ma'am, we can have like in incidental sampling or accidental sampling that it can be possible to have biases associated with this. Absolutely, absolutely. It can have all sorts of biases. हर type का bias इसमें आ सकता है. Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes. Okay. Now, moving on to the next technique, which is systematic sampling. Now, let me give a disclaimer before we start this. In some books, you will find systematic sampling under probability techniques, under random selection. I'll explain to you why. And why in some books it is under non-probability. ये confusion systematic sampling को लेके रहता है. Some books say कि ये random है, some say random नहीं है. I'll explain to you. First, what is systematic sampling? Systematic sampling may be defined as drawing or selecting every nth person from a predetermined list of elements or individuals. कि मैं कह लूं कि आपकी अगर 50 की क्लास है तो मैं every 5th student I'm taking, ठीक है? Every 5th roll number I will take in my sample. Now, similarly, that जब survey होता है तो what they do is they take a telephone directory. अब तो telephone directories इतनी नहीं use होती. जब होती थी किसी time पे telephone directory में every 10th individual या every 8th individual को phone करके survey करना, right? This is called systematic sampling. Now, it can be random also, right? But sometimes जो list बनी होती है वो किसी criteria के base पे बनी होती है. जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं students की list ले रही हूँ तो वो marks के according बनी हुई है. It's या alphabetically बनी हुई है या say it is made on the criteria of some internal assessment or something. जिन्होंने fees पहले भरती. So when there is some specific criteria for that list, then taking every 5th student, it can reduce the randomness of that sample. So I'm also not putting systematic sampling with a lot of confidence in non-probability. In fact, in most books, you'll find it in probability only. But yes, if it is, done with some criteria, अगर list किसी criteria के base पे बनी हुई है, फिर randomness थोड़ी compromise हो सकती है. So इसको हम 100% purely probability technique नहीं कहते हैं, but it is very, very close to a probability technique. It is very close to random selection, right? It is, again, you don't have to pick names from a fishbowl or anything like that. You just have to decide every one number. जिस पे list हो, एक limited number of sample हो, then this technique can be used very easily. If it's a very large sample, then it can become difficult. So if the list is arranged in some way, it is arranged in terms of age or gender or something like that, then it can affect the total randomness. But still, despite these limitations, systematic sampling is very close to a probability technique or random selection technique. समझ आया सबको? I hope you understood what I was trying to say कि systematic sampling को you a lot of times find it in probability, but आपको ये पता होना चाहिए, ये concept clear होना चाहिए कि इसमें pure randomness हो सकता है कि ना achieve. All right. Our next technique, again, as students, you always liked the name of this technique. ये बड़ी cute लगती है सुनने में technique, और ये भी हम बहुत use करते हैं. Convenience sampling use करते हैं तो ये भी बहुत use होती है, which is snowball sampling. What is snowball sampling? It is a non-probability sampling method. It is basically sociometric in nature.
It is defined as having all the persons in a group or organization identifying their friends or their associates, who in turn will identify their associates, and so on until the researcher observes the desired sample or observes a certain pattern in association. So obviously snowball sampling is used for what? It is used for obtaining an impression of informal social relations amongst individuals. Jaise, I want to select, I take, suppose say, I am taking Shrija and Saloni. I have taken Shrija and Saloni. I have done the test with them. And then I'll tell Shrija कि two people who you know, जो आपको लगता है कि इसमें, you know, जो ये मेरा criteria full कर रहे हैं, female हो, इस age के हो, इस class में पढ़ रहे हो, please अपने 2 friends को भी include कर लो इसमें. Saloni, आप भी अपने 2 friends को include करो. फिर आपके वो 2 friends को बोलो कि आप अपने 2 और ले आओ और आप अपने. This is called snowball. I hope you're all aware of the nature of a snowball. जब पहाड़ के ऊपर से एक स्नो की बॉल गिरने लगती है तो वो जैसे जैसे नीचे आती है वो बड़ी होती जाती है क्योंकि वो साथ में और स्नो कलेक्ट करती जाती है. सो इन स्नोबॉल सैम्पलिंग आल्सो वी डूइंग दिस. वी स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर बट आगे आगे उनके एसोसिएट्स को हम इंक्लूड करते जाते हैं और हमारा सैंपल बड़ा होता जाता है. ठीक है. देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. इट कांट जस्ट बी आर्बिट्ररी कि श्रीजा यू गेट एनी 2 फ्रेंड्स ऑफ योर्स. नो, जो क्राइटेरिया है मेरे स्टडी का, दैट क्राइटेरिया Ma'am, your voice is breaking. I think ma'am has got disconnected. Just wait for 5 minutes. She will be joining very soon. Yes, I'm very sorry about getting disconnected again. All right. Am I audible now? Is my voice still breaking? Yes, ma'am, you're audible. Right. Yes. All right. Ma'am, Meenakshi ma'am, you're going to have to enable screen sharing again because I had to sign in again to Zoom. So Okay. Richa ma'am, please do this. I'll be there at my home within 5 minutes. Just do once. Richa ma'am?
Okay, it's enabled now. It's happening now. Okay. Yes. So I was saying कि snowball sampling, it's like we know the nature of a snowball. जब अगर from a snow mountain अगर ऊपर से snowball एक छोटी सी snowball roll करना शुरू करती है, तो जैसे जैसे वो नीचे को आती है वैसे वैसे वो और snow इकट्ठी करती जाती है and it keeps getting bigger. So snowball sampling is the same thing. We begin with a small number of individuals, and as and when we move ahead in the research, the number of the size of the sample keeps increasing. It keeps becoming larger. Now, such sampling is convenient when we are studying any manner of social change, or we are working with a well-connected organization or social institution, like जैसे students का एक organization, you are all part of a social group. So when we are dealing with a particular social group, then this kind of sampling can be used and can be used very well. Through snowball sampling, also get an idea of the communication patterns in that social group, how decision making is happening in that social group, how interactions are happening in that social group, and at various stages various other sampling procedures can be used. In spite of this, there are some limitations. If we want to reach a very large sample size, अगर हम चाहते हैं कि हमारा end sample size बहुत बड़ा हो, then snowball sampling can take a lot of time. एक तो होता है कि आपने शुरू में ही 100 का sample ले लिया है, select कर लिया, and you started with your research. One is that you're starting with 4 or 5. You're constantly waiting for that person to get more, for that person to get more. So if the sample size is going to be large, it can take some time. Also, the sample will not be random. It will not be a randomized sample. So that is the common disadvantages in all of these techniques. Now, the next two sampling methods that we have are saturation and dense sampling. These are two sampling techniques that are used less frequently. थोड़ा कम use होती हैं, saturation and dense sampling techniques. Saturation sampling is defined as drawing all individuals that have characteristics that are pertaining to my study. Say, for example, I want to take all doctors who are above the age of 45 from my city only, or say from my locality only. So I've taken all, but I've defined, जो मैंने define किया ना sample population को, that is very limited. मैंने बहुत limitation बहुत छोटे area में define कर लिया और सबको ले लिया. Saturation का क्या मतलब होता है? What is saturation? When we study saturation in school, we study with the example of sugar and water. पानी में हम तब तक चीनी घोलते रहे, शुगर घोलते रहे, जब वो घुलनी बंद हो जाती है, that means उसका saturation level increase हो गया. अब इससे ज्यादा चीनी और उस पानी में घुलेगी नहीं. जितने water molecules के बीच में जगह थी, उतने सब जगह में sugar के molecules चले गए हैं. अब और नहीं होगा. Saturation has reached, right? Saturation जल्दी भी reach तभी होगी if water is very little. बड़ा सारा पतीला लोगे तो बहुत चीनी घुल जाएगी, बहुत late saturation reach होगी. In social science research, saturation sampling says you've limited the definition of your population. I am saying, जैसे मैं कह रही हूँ, my population is my class only. और मैंने then I have taken everyone. So that then is called saturation sampling. मैंने population define करने में ही बहुत saturate कर लिया, उसी को sampling का एक तरीका बना लिया. Population को छोटा define करना ही मेरा sampling का तरीका बन गया, and I've taken everyone, right? Then sampling is somewhere it lies between random sampling and saturation sampling. Dense sampling में क्या करते हैं? When the researcher selects 50% or more from the population, right, and takes a majority of the individuals who have that specified trait or characteristics, that is called dense sampling. मतलब, for example, if my total population is 1000 and I'm selecting more than 50% for my, मतलब मैंने पूरी population भी नहीं ली, पर मैंने बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया, 50 majority of the population मैंने ले ली. I'm saying total population is 1000 और मैंने अपने sample में 600, 700 select कर लिए, 500, 550 select कर लिए. This is called dense, घना sample. ये घना तरीके की sampling हो गई. This is a very dense sampling. In usual sampling, अगर 1000 की population होती है, so we अब जैसे if you see PhD research, now the total population of students all over Patiala
must be very, very high. It must be crossing lakhs. But in PhD research, how many people do we take? 350, 450, 600, 700, right? This is sampling. When normal sampling. When we take more than 50% of the entire population, then it is dense sampling. All right? We've taken, मतलब हमने पूरा sample तो पूरा population तो नहीं लिया, but फिर भी हमने बहुत majority amount of population ले लिया. That is called dense sampling. The advantage of saturation sampling is it is convenient. You defined your population in very limited terms. It is very convenient. And where the population number is not very high, अगर 1000 की population है, 5000 तक की भी है, then dense sampling can be done. फिर भी हो सकता है. If the population is very high, then dense sampling and saturation sampling is very difficult. It will not be achieved. So that is why these techniques, both of these methods are not used very frequently. I'm sure a lot of you may not even have heard of these techniques. They are not discussed very often. Finally, the last sample we have is called double sampling. What is double sampling? As the name implies, sampling हम दो बार कर रहे हैं. Now, double sampling का it is a part of your research design, somewhat similar to multi-stage sampling as well. So now, for example, I've taken a sample of 1000 individuals. ठीक है, 1000 individuals पे मैंने population लिए 10,000 की population थी, उसमें से मैंने 1000 ले लिए. Randomly नहीं है, पर 1000 ले लिया, arbitrarily ले लिया. 1000 पे मैंने से 10 questionnaires लगा दिए. ठीक है, 10 questionnaires थे मेरे. मैं academic experience देख रही हूँ, self esteem देख रही हूँ, motivation देख रही हूँ, सब देख लिया. उस 1000 सबके ले लिए. उस 1000 sample में से जो मुझे फाइंडिंग्स आई, उससे मैंने एक और रिसर्च क्वेश्चन बनाया रिलेटेड टू दोज वेरिएबल्स, एंड अब मैंने उसमें से एक छोटा सैंपल निकाल लिया. से मैंने 300 का सैंपल निकाल लिया और उनके ऊपर मैंने और टेस्टिंग. दिस इज कॉल्ड डबल सैम्पलिंग. सो इट्स पार्ट ऑफ माय रिसर्च डिजाइन. पहले दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स टू, जब वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मेथड को मिक्स करते हैं, पहले वो क्वांटिटेटिवली ज्यादा सैंपल पे क्वेश्चनर्स लगाते हैं, फिर वो अपने उनकी जो फाइंडिंग्स आई उसके ऊपर अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वो बड़े सैंपल में से ही कुछ लोग चुनते हैं, छोटा सैंपल लेते हैं, जिनको वो फिर इंटरव्यू करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल सैम्पलिंग. नाउ फॉर डबल सैम्पलिंग टू बी इफेक्टिव, इट इज एसेंशियल दैट द सैम्पलिंग इज फॉलोड फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से वो नोशन क्लियर होना चाहिए कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर एंड रिजल्ट. Only then you'll be able to do double sampling properly. Otherwise, it can end up in being a waste of time and labor. Clear to everyone? These sampling methods are clear. सबको समझ में आए सारे? Yes, okay. Yes, ma'am. Beautifully explained. Thank you. Now, moving on. What is good sampling? What is good sampling? Yes, Saloni? Ma'am, I wanted to ask one thing. अगर हम लोग डबल सैम्पलिंग में पहले n 10,000 लेते हैं, तो तभी क्यों नहीं, मतलब हम लोग 300 ले रहे, पहले 1000 चूज करेंगे फिर 300 क्यों, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? क्योंकि मैं 10,000 पे नहीं कर सकती, मैं एंटायर पॉपुलेशन पे नहीं कर पा रही. अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 10,000 पे कर लिया, 10,000 में पॉपुलेशन का एग्जाम्पल दे रही थी. सो अगर मैंने टोटल पॉपुलेशन ले ली तो फिर मैंने सैम्पलिंग नहीं की. डबल सैम्पलिंग इज जब मैंने दो बार, मैं आई डोंट हैव द रिसोर्सेज कि मैं 10,000 पे कर लूं, तो मैंने पहले 1000 को लिया, फिर उसमें से मैंने 300 या से इवन 100 सिलेक्ट कर लिए. राइट, तो ये डबल होगी. अगर मैंने 10,000 में से 3 कर ली तो सिंगल सैम्पलिंग हुई, है ना? मैम एडवांटेज क्या हुआ कि ऐसे दो बार ऑफ डबल सैम्पलिंग? सी आई टेल यू व्हाट इज द एडवांटेज. अगर if you've done a study in this, you'll understand. Let me give you an example. मैंने करना है, I want to see कि what is the common opinion कि online teaching और offline teaching में क्या comparison है, students को क्या दिक्कतें आ रही है, या उनकी क्या problem है, या what are the variables that make someone prefer one or the other. So I want to do, it's my aim to do a quantitative and a qualitative analysis both, right? I want to, for the purposes of my research, for a thorough research, मुझे statistical analysis भी लगाना है data पे, correlation भी ढूंढना है. Correlation से मैंने ढूंढना है between academic achievement and online teaching, okay? Online classes. So मैंने क्या किया, जिन्होंने भी online classes ली वो एक बड़ी population होगी,
ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड हैज बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. चलो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, मैं सब स्टूडेंट्स को तो नहीं कर सकती, मैंने फिर भी सिर्फ 500 स्टूडेंट्स ले लिए जिनको मैंने क्वेश्चन दे दिया, एकेडमिक अचीवमेंट का कोई मेजर ले लिया, और ऑनलाइन का जो भी मेरा कोई सर्वे है, कोई क्वेश्चनर मैंने बनाया टू गेट देयर एटीट्यूड रिगार्डिंग ऑनलाइन टीचिंग, वो मैंने लगा दिया. ठीक है, आई हैव डन दैट. नाउ उनके रिस्पॉन्सेज को देख के कि क्या कोरिलेशन आया है, एटीट्यूड के कौन से सब टाइप्स पे ज्यादा कोरिलेशन हैवी आया है, सिग्निफिकेंट आया है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आया है, उसके बेसिस पे मैंने अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन बनाए, क्योंकि आई वांट टू नाउ एक्सप्लोर द फिनोमेना फर्दर डीपर. नाउ आई वांट टू डू इंटरव्यू. अब उन्हीं 500 के ऊपर दोबारा से सारा इंटरव्यू करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो आउट ऑफ दैट 500, बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स, उनके ऊपर ही जो मैंने क्वेश्चनर लगाए, उनकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे मैंने अपने क्वेश्चन बनाए इंटरव्यू के. उन्हीं में से मैंने से 50 या 60 या 100 चुन लिए 500 में से. अब मैं उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, फुल इन डेप्थ एनालिसिस ले रही हूँ ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. राइट? समझ आया रिसर्च डिजाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I got it. Yes, Akshita? Ma'am, can you please re-explain the criteria for the snowball sampling? Actually, that's criteria for? Little louder. Criteria for? Ma'am, criteria for the snowball sampling. Actually, that's snowball sampling. Yes. Snowball sampling. Yes, snowball sampling is effective or should be used where there is जो हम sample जो population को cater कर रहे हैं, there is a social cohesiveness in that sample. Now, if I say I am taking students, and I am taking students, or I am taking working mothers, I can tell them कि you've done my sample, please अपने 2 और colleagues को भी कह दो कि कर लो, right? If I'm taking a more wider, more general population, जहाँ की social cohesiveness मैं नहीं identify कर रही हूँ, then snowball sampling will lose its purpose. Then if that person वो अपने ही criteria वाले और लोगों को नहीं ला पाएंगे, या अपने सिमिलर लोगों को जो मेरे फिट हो रहे रिसर्च में वो नहीं ला पाएंगे, then snowball sampling can't happen. स्टूडेंट्स को मैं कह सकती हूँ ना, लाइक आई कैन टेल अंजलि, आई कैन टेल गौरी, आई कैन टेल रूही, आई कैन टेल यू कि आपने भर दिया है, अब अपने क्लासमेट्स को भी बोलो कि आके भरेंगे, अपने 4 क्लासमेट्स को भी बोलो कि आके भरेंगे, राइट? वेयर देयर इज सम कॉमन सोशल क्राइटेरिया, और जो मैंने वेरिएबल बनाया वो एक कॉमन थ्रेड में, एक कोहेसिव ग्रुप में मिल सकता है, वेयर यू आर एसोसिएटेड विथ द पर्सन आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू ब्रिंग, then that is there I will use snowball technique. Okay, Akshita? Okay, ma'am. That means this social criteria needs to be fulfilled. What is the aim of this study? I'm sorry? All right, ma'am. No, please tell me. Please tell me. What is the aim of, what is the aim of such a study? No, ma'am, I understood. It's just like the criteria with which is started, it needs to be fulfilled. If I'm suggesting something. Yes. Right. Okay. Anjali, you have a question? Yes, ma'am. Can you please re-explain saturation sampling? Saturation sampling is when we define the population itself in very limited terms. In that defining of the population only, we have done sampling. If जैसे I gave you the example that I am saying urban estate, I live in a locality called urban estate. कि urban estate में जो भी doctors हैं जो 45 के age के ऊपर हैं, they are by population, and I've taken everyone, right? I've taken everyone. कितने होंगे in my locality? They maybe we do have a lot of doctors around here. So, or if I say professors, क्योंकि university के पास है lots of professors. So all professors above the age of 45 want to take, right? They must be, say, at this point they may be 400, 500, and I've taken all. वैसे the population of professors is much larger, right? अब ये जो मैंने स्टेप किया ना पॉपुलेशन को नैरो करने का, वही मेरा सैम्पलिंग हो गया. वो जो ये 500 टीचर में ले रही हूँ वो ऑल ओवर टीचर्स का सैंपल बन गया, राइट? सो सैचुरेशन इज व्हेन वी डिफाइन द पॉपुलेशन इन वेरी लिमिटेड टर्म्स एंड देन वी टेक ऑल ऑफ देम. सो हमारा पॉपुलेशन को डिफाइन करना ही हमारा सैम्पलिंग मेथड बन गया, राइट? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Yes, Bhavya?
Good evening, ma'am. Ma'am, Good can evening. you throw some light on multi-stage sampling? Is it the same as cluster or area sampling, or is it different from that? It is similar. It is similar to area and cluster sampling, and in some cases, it is kind of both the words are used interchangeably also. Multi-stage sampling is a randomized process. We first divided on the basis of area. फिर उसके बेस में अंदर भी हमने रैंडम सैम्पलिंग की ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, सो देन इट बिकम्स मल्टी स्टेज. एंड एरिया के अंदर भी सब एरियाज बन सकते हैं. सब एरियाज में भी क्राइटेरिया बना सकते हैं कि हम मेल जेंडर ही ले रहे हैं या फीमेल ही ले रहे हैं, राइट? सो वी आर फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप. एरिया सैम्पलिंग में एरिया सैम्पलिंग इज मोर ऑफ जस्ट डिवाइडिंग एरियाज एंड देन गोइंग टू एरियाज में जाके जब हम और कर रहे हैं सैम्पलिंग, राइट? एरिया में जाके भी जब मैं और सैम्पलिंग कर रही हूँ, रैंडमाइज कर रही हूँ, देन वो मल्टी स्टेज हो जाती है. Okay, ma'am. So, ma'am, what would be its advantage? मल्टी स्टेज? Yes. See, मल्टी स्टेज लाइक इट्स सेम. जो हम एप्लीकेशन हमने एरिया और क्लस्टर की ना, वही मल्टी स्टेज में बैठते. जब हमारी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, बहुत लार्ज है, एंड वी वांट कि हम ज्यादातर जितना हो सके उतना वाइड कवरेज करें. अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने स्टूडेंट पॉपुलेशन पे करना है, मुझे स्टूडेंट्स का एक चीज पता करनी है, ऐसे सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन का कनेक्शन पता करना है स्टूडेंट्स का, ऐसे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का कनेक्शन ढूंढना है ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन. अब स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत लार्ज है. इवन इफ आई एम ओनली सेइंग ऑफ इंडिया और इफ आई एम ओनली सेइंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो भी स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत लार्ज है. एक तरीका तो ये है कि जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कि मैं अपने जो भी एक्सेस है मुझे स्टूडेंट्स को जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं या मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आसपास के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, थोड़ा और चली जाऊं तो चंडीगढ़ के कॉलेजेस में चली जाऊं, है ना? एक तो ये हो गया. एक हो जाएगा मैं वाइड एरिया कवर करना चाहती हूँ. आई वांट टू कवर अ लार्जर हेट्रोजेनिटी. Then what I can do is I can divide North India into different areas or different clusters, छोटे छोटे clusters में करके फिर उस clusters में जाके मैं थोड़ा थोड़ा लूं. तो मैं स्टूडेंट पॉपुलेशन ही कर रही हूँ, सैंपल ही बना रही हूँ, पर मैं कन्वीनियंस प्योरली आउट ऑफ वो 100% कन्वीनियंस नहीं कर रही हूँ. मैं थोड़ा वाइड एरिया कवर करना चाहती हूँ. आई वांट टू कवर अ लार्जर पॉपुलेशन. You know, do you understand what I'm saying? So my sample has more chance of being representative of the population. अगर मैं सिर्फ पटियाला में से कर लूंगी तो सिर्फ मुझे एक से पंजाबी एटीट्यूड का पता चल जाएगा, राइट? नॉर्थ इंडिया से करूंगी तो फिर भी देयर आर डिफरेंट एटीट्यूड्स दैट आई कैन बी एक्सपोज्ड टू. ऑल ओवर इंडिया से करूंगी और भी वेरिएशन मिलेगा मुझे, और भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ द टोटल सैंपल की स्टूडेंट्स एक्चुअली इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को कैसे साथ लेके चलेंगे, राइट? You understand now, Bhavya? Yes, I'm got it. Thank you so much, ma'am. Okay. All right. So, what is good sampling? You know, what is a good sample? Any sampling method can be good and scientifically sound, but it must possess two qualities. Sample की दो qualities होनी चाहिए. It must ensure representativeness of the sample. Of course, non-probability techniques में guarantee से तो representativeness नहीं ensure हो सकती. To be representative is that a selected sample must represent the population. It means that it must be typical of the population. Characteristics of sample should be similar to characteristics of the population. All of that is there. Exact same तो होता ही नहीं है, but approximation same हो. But it is not feasible. हम entire population को we can't test. It is not feasible in most cases. So if the sample, even to some extent, if it mirrors the population, it can give wide generalizability to our research. तो अगर हम random नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर हम proportion भी same रख लें, I'm not able to select randomly the sample, but at least if I at least try to match the proportion of the different strata, उससे भी ensure हो जाएगा. Representativeness even in non-probability sample हम ला सकते हैं कुछ हद तक. कैसे? अगर हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से डिफाइन करें, अच्छे से समझें that what are the characteristics of this population. If you define your population well and then you do sampling, even if you're doing non-probability sampling, you can get an acceptable measure of representativeness. Second, adequacy of the sample. Adequacy of the sample. Sample must be adequate. What does this mean? To be adequate, sample has to be of sufficient size.
देयर इज नो रिजिड रूल, कोई रिजिड रूल नहीं है कि सैंपल साइज ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट जनरली सैंपल साइज जितना कम होगा, जितना छोटा होगा एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, उतना सैम्पलिंग एरर हाई होने का चांस है. If the actual population is of 10,000 and I'm only taking a sample of say 10 or 100, it will not be a very good sample. It will not be a very strong sample, right? So sampling size needs to be adequate. We'll discuss a little bit more about sampling ahead, but दो चीजें ये होनी चाहिए. Try to make your sample representative. Try to have as much size of the sample as you can manage. Because जितना बड़ा sample size होगा, उतना ही sampling error कम होगा. Why do we do sampling? एक तो ये reason तो है कि पूरी population को तो हम, yes Saloni, yes. Ma'am, sampling error we mean that कि approximation जो characteristic है population की वो sample की हो, यही sampling error. हाँ ना, इनमें दोनों में जो फर्क होता है वो sampling error होता है. sampling. हाँ 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 बिल्कुल और सही. अगर हमारा sample जितना बड़ा होगा तो sampling error उतना कम होगा. होने के chances कम है. Yes. Okay. Just confirm. Okay. Yes. Now क्यों करते हैं हम सैम्पलिंग? एक तो ये रीजन तो है ही है कि हम सारी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, एक्सेस नहीं होता है, कॉस्ट नहीं है, दिस ऑल ऑफ दोस रीजंस आर देयर. दैट इज व्हाई वी डू सैम्पलिंग. बट देयर आर अदर बेनिफिट्स ऑफ सैम्पलिंग इज वेल. Accuracy of your study can increase by sampling when you are not working on the entire population and you're working on a smaller sample. Your volume of work is less. When volume of work is less, you can concentrate, you can focus, you can, your accuracy of the investigation will be higher. Similarly, cost is reduced. You may have access to a big sample, but there are so many costs that, जो data collection में, field research में इतनी cost होती है, cost reduce होती है sample करने से. And finally, speed is increased. You may have cost, everything, you may have resources, but अगर आप 1 लाख के sample पे करने लगे, you will need time. And we don't have that amount of time. So to do research quickly, we all have deadlines. सबको deadlines है. अगर आपने research paper submit करना है तो deadlines है. PhD करनी है तो deadlines है. You have a certain number of years. उस years में भी data collection आप एक certain amount of time में ही करते हो. So speed is increased when we derive a sample out of the population. Now let's talk about sampling error a little bit. ठीक है, बिफोर वी कंक्लूड आवर स्टडी, बिफोर वी से कि हो गए सारे सैम्पलिंग मेथड्स कंप्लीट हो गए, एक बार सैम्पलिंग एरर को थोड़ा सा लेट्स डिस्कस. बाय नाउ वी हैव डिस्कस्ड, बार आया से अभी सलोनी वेरी ब्यूटीफुली शी समड अप व्हाट इज सैम्पलिंग एरर. वेरी क्लियरली इट सीम्स टू मी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सैम्पलिंग एरर. Sampling, what is sampling? Sampling is the process of drawing a limited number of cases from a larger population. Whatever is the sampling procedure used, कोई भी जो अभी हमने सारी टेक्निक्स कर लिए, any technique that has been used, sample must represent जितना हो सके characteristics of the, it must represent the characteristics of the population that are related to the problem under the study. Again, I'm just repeating for clarity. A statistical measure calculated from a sample is known as statistic. Corresponding measure, which is derived from the population, is known as parameter. A mean calculated from a sample of a population is called a statistical mean, and the value of mean that is derived from the population is known as parameter mean. Sampling error is the difference between parameter and statistic. Simple as that. Sampling problem kab hoti hai? What is a sampling problem? Whenever the conclusion that we have drawn from the sample, when that is not applicable to the entire population, then we feel it, that means there is a sampling problem, right? Whatever I have inferred, जो भी मैंने research की है, जिस sample पे मैंने की है, जो मेरी findings आ गई, वो findings बाकी population पे, सारी population पे applicable ही नहीं है. That means there has been a sampling problem. I have not taken a sampling problem. Another important clarification: sampling error does not refer to the variations which are inevitable in a large group. जब भी हम सैंपल ले रहे हैं, जब भी हम पॉपुलेशन की भी बात करते हैं, लोग एक जैसे नहीं होते. पीपल आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो सम जनरल वेरिएशंस फॉर एनी वेरिएबल वो होंगी ही होंगी इन द सैंपल. हम एनपीसी पढ़ते हैं ना, पूरी पॉपुलेशन में कोई भी ट्रेट एग्जिस्ट करती है तो एनपीसी में एग्जिस्ट करती है ना. देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिसमें एक वैल्यू होगी, कुछ एक एक्सट्रीम पे होंगे, कुछ एक एक्सट्रीम में होते हैं. ठीक है,
तो ये जो नॉर्मल वेरिएशन एग्जिस्ट करती है ये तो करेगी ही, इसको हम सैम्पलिंग एरर नहीं बोलते, ठीक है, दैट इज नॉट सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर इज व्हेन द पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल मीन. जो सैंपल के विद इन वेरिएशंस है दैट इज नॉट सैम्पलिंग एरर, ठीक है. सैम्पलिंग का मेथड कोई गलत लगाया है उसको भी सैम्पलिंग एरर नहीं बोलते, वो नॉन सैम्पलिंग एरर है, वो भी करेंगे, ठीक है. सैम्पलिंग एरर से ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो सैंपल मैंने लिया उसकी फाइंडिंग्स पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है. दूसरी चीज ये भी हो सकती है, आज मैंने ये सैंपल लिया, इसकी ये फाइंडिंग्स आई, उसी पॉपुलेशन में से मैंने कल एक और सैंपल निकाला, उसकी अलग फाइंडिंग आ गई, उसी पॉपुलेशन में से मैंने चौथा सैंपल सिलेक्ट किया, उसकी फाइंडिंग अलग आ गई. सो व्हेन विद इन द सेम पॉपुलेशन अगर मल्टीपल सैंपल्स के बीच में भी अगर मीन्स में डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ऑल्सो सैम्पलिंग एरर. That is also sampling. This fluctuation is also sampling error. You know, so ये जो sampling error है किस पे depend करता है? It depends upon two things. One is the size of the sample. Like I keep repeating, size जितना बड़ा होगा sample का उतना sampling error कम होगा. Variability in the population. Sometimes that variable is so dynamic in the population. वो इतना vary करता है from person to person कि वो उसका सैम्पलिंग एरर बहुत हाई आएगा ही आएगा. I'll give you an example. In my study, in my PhD research done many years ago now, I had taken up the Rorschach test. I had done the Rorschach test. I had used it as a measure of creativity. अब Rorschach test के बड़े सब पार्ट्स होता है. I don't know आप में से कितनों ने Rorschach किया है, बट अगर आप देखो तो Rorschach test में बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं. So then I was seeing the normal distribution of all the variables. There were 2-3 sub कैटेगरीज ऑफ द Rorschach जिनमें बहुत स्क्यूनेस आ रही थी, बहुत एक्सट्रीम स्क्यूनेस आ रही थी, एंड आई गॉट वरीड. एज अ स्टूडेंट यू गेट वरीड बाय दीज थिंग्स, नो. सो आई गॉट वरीड कि इतनी स्क्यूनेस क्यों आ रही है, कल को मुझे तो जो वाइवा लेने आएंगे वो बोलेंगे कि आपने तो सैंपल नहीं ठीक से लिया इसलिए इतना स्क्यूड आ रहा है. देन माई गाइड एक्सप्लेन्ड टू मी कि ये जो सब कैटेगरीज है ना Rorschach की, ये बाय नेचर ही ऐसी हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है पॉपुलेशन में, ये ऐसी स्क्यूड ही होती है. सो समटाइम्स कोई वेरिएबल ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा वेरी करता है इन द पॉपुलेशन, उसमें फिर सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उसमें सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस बहुत हाई. सो दीज आर 2 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सैम्पलिंग एरर ज्यादा होगा कि कम होगा. 1, साइज ऑफ पॉपुलेशन. 2, वेरिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट इन द पॉपुलेशन. नाउ सैंपल साइज, ये हमने सैंपल साइज की हम बात कर रहे हैं, सैंपल बड़ा हो तो अच्छा है, बट सैंपल साइज कितना लेना चाहिए? व्हाट सैंपल साइज, हाउ लार्ज शुड द सैंपल बी? Sample size can be determined using a mathematical formula. You can refer to your statistical books. There is a formula for finding out sample size, or you can find tables like these. You know that take into account कि आपको confidence interval कितना चाहिए और population size कितना. Do you want कि point जैसे से 0.05 significance पे मुझे ±3% की वेरिएशन ही चाहिए, या ±5% की सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में ±3% का ही फर्क हो, या सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में ±5% का ही फर्क हो. ठीक है. सो इन दिस टेबल यू कैन क्लियरली सी साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर 2000 है और मुझे 0.95 कॉन्फिडेंस लेवल मतलब 0.5 लेवल पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो चाहिए वो सिर्फ 3% ही प्लस माइनस हो, तो मुझे कितना सैंपल साइज लेना पड़ेगा? 696, राइट. 5% तक में वेरिएबिलिटी आई विल बेयर विद इट, आई एम ओके विद इट, तो मैं और छोटा सैंपल ले सकती हूँ 322. 10% ऑफ वेरिएबिलिटी इफ आई एम सेइंग कि 10% ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, देन आई कैन डू विद 92. You understand? You see this table? Such kind of statistical tables also we have available. अगर हमें पूरा population size पता है and we कितना हमको confidence interval चाहिए in prediction, उससे हम decide कर सकते हैं कि हमने कितना sample लिया, right? Sampling error के अलावा non-sampling errors भी होते हैं. Non-sampling errors में instrument की कोई error हो सकती है. Sample mean और population mean में फर्क क्यों आया? एक तो sampling error हो गया. There can be other errors also, which are not sampling errors. Yes, Shrija? Ma'am, I don't understand confidence level. What's that? Confidence level. Okay. When I say, let me think of an example of confidence level. I'm saying कि मैंने एक workshop करानी है अपनी डिपार्टमेंट में. मेरे डिपार्टमेंट में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं.
ठीक है. I want to do a workshop. So someone is asking me कि how many participants will be present. आपके डिपार्टमेंट में 200 स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंट कितने होंगे? तो आई से कि मेरे हिसाब से तो 160-170 स्टूडेंट्स तो आएंगे, प्लस माइनस 10 कर लेना. मैं 160 बोल रही हूँ पर प्लस माइनस 10 अलाउड है. 160 बोल रही हूँ पर मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि प्लस माइनस 10 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. 150 से कम नहीं आएंगे, 170 से ज्यादा नहीं आएंगे. दैट इज माई कॉन्फिडेंस इंटरवल. ये जो स्पीड लिमिट होती है ना, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग हाईवे पे, स्पीड लिमिट होती है. स्पीड लिमिट क्या होती है? 90 होती है. उसमें हमें प्लस माइनस 5% अलाउड होता है. अगर आपका 85 भी होगा तो भी आपको अलाउ कर देते हैं, अगर आपका 95 होगा तो भी आपको अलाउ कर देते हैं. Yes, when they want to collect bribes and all, they will not do this, but generally this is the thing. This is called confidence interval. कि ये वैल्यू आई है, पर इससे जो मेरे सैंपल में, जस्ट अ मिनट शिक्षा, तो मेरे सैंपल में ये मीन आया है. इससे अगर मैं 3% कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रही हूँ, जो पॉपुलेशन का मीन है ना, या तो इससे 3% ऊपर होगा, 3% नीचे होगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, इतनी मैं कॉन्फिडेंट. दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. करेक्ट श्रीजा? यस मैम. ओके. ये शिक्षा मैम पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी, जैसे 50,000 जैसी है, तो इसमें कैसे, मतलब मीन कैसे निकालेंगे? there are formulas to calculate, there are formulas to predict, there are formulas to calculate. Sometimes we also take from previous researches also. Why I did not take up the formulas, because of calculation I feel that someone who does the calculation and shows it to you is better, but you can refer जो आपके बुक में चैप्टर है, if you want I can email the required formulas and chapters also. There are formulas to calculate all of that. Okay ma'am. Yes, again very valid question. When I was a student तो मुझे भी ये question बहुत trouble करता था. Anything else? Any other question? Okay. So this is about sample size. Non-sampling errors. So sometimes जो sampling mean और population mean में फर्क आ जाता है, या जो हम कह रहे हैं कि जो मेरे सैंपल पे फाइंडिंग्स आ गई वो फिट नहीं बैठ रही पॉपुलेशन के एक्सपीरियंस पे, या पॉपुलेशन पे नहीं लागू हो रही हैं वो फाइंडिंग्स. ये क्यों हो सकता है? एक तो सैम्पलिंग एरर हो गया है ना, जो हमने पढ़ लिया. देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ एरर्स आल्सो. इंस्ट्रूमेंट में एरर्स हो सकते हैं. हमने जो टूल लिया वो सही नहीं था, जो हमने क्वेश्चनर लिया वो उस वेरिएबल को अच्छे से नहीं कवर किया, उस वेरिएबल ने, दैट वेरिएबल डिड नॉट सूट. अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग का वेरिएबल है एक, ठीक है, उसका बहुत लोग वॉटसन ग्लेजर टेस्ट यूज करते हैं. वॉटसन ग्लेजर टेस्ट इंडियन पॉपुलेशन पे अच्छा रिजल्ट देता ही नहीं है, राइट? ऐसी जो टीएटी है, हम टीएटी जब यूज करते हैं हम उमा चौधरी वाला यूज करते हैं क्योंकि वो इंडियन पॉपुलेशन पे सूट बैठता है, राइट? समटाइम्स इफ यू टेकन द रॉन्ग मेजरमेंट टूल, उससे भी सैंपल की फाइंडिंग्स और पॉपुलेशन की फाइंडिंग्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि जो आप ट्रेट मेजर कर रहे हो ना, उसने वो ठीक से मेजर ही नहीं किया. क्वेश्चनर डिफेक्टिव हो सकता है, टूल ऑपरेटर्स में कोई गलती हो सकती है, या जो आपने ऑपरेशनली डिफाइन किया वेरिएबल, द वे यू हैव डिफाइंड द वेरिएबल ऑपरेशनली, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन दैट आल्सो. यू हैव नॉट अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द वेरिएबल. रिस्पोंडेंट की तरफ से गलती हो सकती है, जिसने क्वेश्चनर भरा उसने पढ़ के नहीं भरा, उसने एवं आंसर भर दिए, सारे यस यस कर दिए, सारे नो नो कर दिया, एक यस एक नो, एक यस नो, ऐसे कर दिया. अंडर रिपोर्टिंग हो गई. कोई नेगेटिव ट्रेट आप मेजर कर रहे हो, सो दे आर नॉट रिपोर्टिंग इट प्रॉपर्ली, या कोई पॉजिटिव ट्रेट आप मेजर कर रहे हो तो वो एग्जैजरेट करके रिपोर्ट कर रहे हैं, और दे नॉट गिविंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज. शिक्षा, डू यू हैव अनदर क्वेश्चन? बच्चे, योर हैंड इज स्टिल रेज्ड. No ma'am. Okay, all right. I thought maybe, and I'm just going on and on. फिर प्रोसेसिंग में, डेटा एनालिसिस में गलती हो सकती है. आई एम नॉट प्रॉपर्ली, अब जैसे रोशा है, यू कैन नॉट इंटरप्रेट द रोशा इफ यू आर नॉट वेल ट्रेन्ड फॉर इट. आप बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे. जो कोडिंग की है, जो आप डेटा एंट्री कर रहे हो, आपने क्वेश्चनर लिखा है पर आप डेटा एंट्री जो कर रहे हो एक्सेल शीट में, यू नॉट डूइंग दैट प्रॉपर्ली, राइट? जो आप SPSS में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, यू हैव नॉट फॉलोड द स्टेप्स प्रॉपर्ली, उसमें गलती हो जाएगी. When you do, these are called non-sampling errors. एक तो होते sampling errors, एक होते non-sampling. ये शताब्दी? मैम इसमें इन्यूमरेटर प्रोसेसर में जो होगा वो नॉन सैम्पलिंग एरर में, तो उसमें जब हम लोग ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा का, डेटा कलेक्शन के बाद, तो वो फॉल्सिफिकेशन या फैब्रिकेशन जो होती है वो इसमें आ जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अब नाउ दैट अगेन, falsification and manipulation is a bias or is a mistake on the basis of the researcher. वो गलती नहीं है, that is being done. Falsification is being done on purpose. जब हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फॉल्सिफाई कर रहे हैं, तो हम जान के कर रहे हैं,
right? So it is not an error in calculation. It is manipulation. It is being done on purpose. Or when we are doing it on purpose, then we can't call it an error, right? जो चीज जैसे हमको जब डांट पड़ती है या कुछ होता है, जब बच्चों को कुछ सिखाते हैं पेरेंट्स, तो यही किया ना, जान के किया तो गलती नहीं है, जो चीज जान के कर ली वो गलती नहीं है, right? So if you're doing it on purpose, it doesn't come under error, right? Then you're diluting or manipulating the results, right? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Now, there is another important aspect to all of this. We've understood now everything I have told you. जो मुझे आता है sampling, I have told you everything. I have told you what is probability, randomness, why sampling is needed, when can it be skipped, what are the different techniques, two major category of techniques, benefits of some techniques, advantages, disadvantages, examples, where all what can be applied, what is sampling error, sample size kya hona chahiye, what is non-sampling error, everything that comes to my mind about sampling, I have told you. Now the question is, what about qualitative research? This entire discussion of sampling is dominated by quantitative terms. Means, statistics, confidence interval, relative frequency, probability, all of this pertains largely, I'm not saying wholly, but largely to quantitative analysis. So now the question arises, whether sampling is similarly required in qualitative research as well. The answer to this question is that in qualitative research, the issue of sampling is not as significant. It has little significance because the main aim of most qualitative inquiries is either to explore or to describe the diversity in a situation or in a phenomenon, right? Jitni generalizability hum quantitative research mein dhoondte hain, that is usually not the aim in a qualitative research. I'm sure you must be having a lecture where you will discuss the difference between quantitative and qualitative research methods. There, whoever will take that lecture will also explain it to you. Qualitative research ka jo main aim hota hai, that is in-depth analysis of a phenomena, usually. Quantitative ka hota hai a widely applicable analysis, generalizable analysis. Not to say कि qualitative में हम generalizability नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि जो मैंने in-depth analysis किया वो सबको applicable नहीं, no. But it is not the main aim. Main aim is exploration or description of the phenomena or the situation or the circumstance or the variable. Qualitative research does not make an attempt to, either quantify or determine the extent of this diversity. No, it wants to understand the dynamics of that diversity. You can even select only one individual for your sample in qualitative research. Single case studies bhi hoti hai in qualitative research and describe the aim of your study accordingly. A study based upon information from one individual or describing one event also perfectly valid in qualitative research. Nobody will question it. But in qualitative research, to explore diversity, what you need to do is you need to reach a saturation point, not saturation sampling. Saturation point reach hona zaruri. That is, when you're finding or when you're questioning or when you're doing interview या जब आप एक ही चीज की information collect करते जा रहे हो, you keep exploring, you keep researching till you're not finding any significant more new information. That means you've reached the saturation point of that research question. तो रिसर्च क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हो, इंटरव्यू चलता रहता है जब तक कि और क्वेश्चन पूछने से कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है? दैट इज सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट भी सब्जेक्टिव होता है, रिसर्चर टू रिसर्चर वेरी करता है. अब जो रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग है उस पर वेरी करता है कि सैचुरेशन पॉइंट कब रीच होता है. सो मेन एम इन क्वालिटेटिव एनालिसिस is to reach the saturation point, right? So in qualitative research, sampling, not saying is absent, but it is of less significance as compared to in quantitative research. So all this talk that we are doing ki probability sampling mein to random sample hai, theek hai, everything is good. Non probability sampling mein itni kamiyan hai, representation nahi hoti hai, ye nahi hota hai, wo nahi hota hai, then why do we keep doing? One is of course practicality hai. We are limited by resources, we are limited by deadlines, we are limited by so many things.
ऑल्सो इवन प्रोबेबिलिटी टेक्निक से अगर रैंडम सैंपल भी ले लेते हैं ना, तो भी 100% गारंटी ऑफ जनरलाइजेशन नहीं होती है। मैंने बहुत अच्छे से रैंडम सैंपल ले लिया इंडिया की पॉपुलेशन पे, पर वो फाइंडिंग्स हो सकता है अमेरिका में अप्लाई ना हो सकता है इवन इन नेबरिंग कंट्रीज चाइना में ना अप्लाई हो, या मैंने पंजाब में भी थरोली, अब जैसे आई हैव बीन वर्किंग विद द गवर्नमेंट in cases of to deal with this drug menace that is going on. We've been doing a lot of work over the last years. So imagine I've done very good work and we've come up with this very good plan, very good intervention system जिससे पंजाब में drug menace control हो गया. It's quite possible कि वो system से कर्नाटका में ना, केरला में ना successful हो, right? So even if we are doing random sampling, there is no guarantee of 100%. Psychology is a field, social sciences एक ऐसी field है, हमारी behavioral sciences ऐसी field है where we cannot guarantee anything with 100%. No matter how diligently we study it, how much effort we put in it, हम किसी भी चीज को black and white में ही नहीं define कर पाते. इतने gray areas होते हैं psychology में. कोई भी trait ले लो, take any trait, take anything. हम तो बड़े कॉन्फिडेंस से किसी ट्रेड को पॉजिटिव या नेगेटिव भी नहीं बोल पाते. अगर हम कह रहे हैं कि अग्रेसिव होना बुरा है, तो हम बिल्कुल सबमिसिव होना उसका ऑपोजिट भी बुरा है. We have to be assertive. So there is no guarantee of any perfect answer to any research question. So जितना हमारे पास है, the resources that we have, the access that we have to data collection, to sampling, to field research, within that, if we do it with sincerity, if we put in hard work, and if we try to, instead of saying कि we want 100, let's try to get how many ever we can. जितने aspects हम cover कर सकते हैं, we cover, then that is what will, that is what will constitute a good sample, a good study. ऐसे तो I find something that is applicable for young people, but that may not be applicable for middle-aged adults. So insight comes in bits and pieces only. And हमको ये insight, ये knowledge bits and pieces में ही मिलनी है. What we can do is कि अलग-अलग samples पे करके देख लो कि variable का क्या nature आता है अलग-अलग samples में, या बहुत multiple studies को refer करो. ये हम कर सकते हैं. Sample को बढ़ाना या sample बहुत ज़्यादा ले जाए वो नहीं possible होगा. So multiple small studies or working with different kinds of samples, that will give us a better understanding. Now, if I am researching creativity, instead of thinking कि मैं एक ही बार में 20,000 का sample लेके creativity सबकी assess कर लूँ और देखो कि creativity क्या है. Rather than that, does it not make more sense that I do variations of study of creativity? I've done one with college students. I'm right now doing a longitudinal study with school students starting from the age of 3. A developmental study I'm doing. Another study that my PhD student is doing is with an intervention. कि creativity में intervention ये वाली लगा के क्या benefit हो सकता है. So that, if done in the proper manner, that will be more beneficial rather than putting all our focus on getting a big sample, right? So take a good, adequate size of sample. I'm not saying that we should not even try to get an adequate, of course, get an adequate size of sample. इतना effort कर रहे हो, so it should not go to waste. So take an adequate size of sample, but don't think that the limitation of your sampling method या जो आपने sampling method लगाया है उसका जो limitation है या disadvantage है वो आपकी study को weak बना है. No, हम इसीलिए sampling method का limitation और advantage पढ़ते हैं ताकि when we are interpreting the results we keep that in mind. We should know the limitation of the sampling method we have used, not because it makes us study weak, but when we are interpreting the results, when someone else is going to use those findings, they should know that the sample was taken like this, so मैं वो caution रख के interpret करूँ, right? So that is what I want to say. This is just a image that I found which just gives a summary of all the sampling techniques. They have also put systematic sampling under probability technique. So these are the ones we've done. Probability में simple, random, stratified, cluster, area, stratified में proportionate, disproportionate, non-probability, convenience, judgmental, quota, snowball. These are the sampling techniques that we've done. And that's about it from my end. Thank you. And open to questions. I'll just stop my screen sharing so that I can read the chat box as well.
Thank you so much, ma'am. It was such a nice lecture, and I think what the beauty of this particular lecture, what I could find that students got very much connected to what you were saying. True, ma'am. And I think Actually, I always tell my students also that teaching is a two-way communication. If it's one-way communication, even it will not benefit you as much also, and even the teacher also, it does not get into that much of a flow. But I really must appreciate such good questions, such insightful questions. It was really, then you want to put an extra effort. When students are so involved, then you also want to do extra. So definitely, I don't think now the students are going to have much question because they have asked. But even if anyone is having any query, they can ask. Sure. Yes, Vanshika, I think has raised her hand. Yes, Vanshika. मैम जैसे कि आपने बताया क्वालिटेटिव में ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है सैम्पलिंग की, बट अगर हमें कोई हमारे पास हमने क्वेश्चनर बनाया है और हमें कैंसर पेशेंट्स के ऊपर कुछ एग्जामिन करना है, कुछ देखना है, तो मैम उसमें हम मतलब कैंसर पेशेंट ही स्पेसिफिकली ले रहे हैं, तो परपोजिव वाली सैम्पलिंग लग सकती है इसमें? आप बात करो क्राइटेरिया की। जब हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो जो हमारा रिसर्च स्टडी का एम है, जो हम पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करेंगे, वो क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही करना है। if I want to do an in-depth analysis with, like you're saying, cancer patients, or if I say with people who have had child abuse, so of course I will take those people who have had incidents of child abuse or who have had cancer. So criteria to follow karna hi karna hai. But the focus in qualitative research is not on I should know everyone who has child abuse and unme se I will select, right? I should know everyone who has cancer and unme se I will select. So wo population or sample mein se jo drawing hai, qualitative mein that is not that strict. I also said it's not absent. Qualitative researchers also sometimes use sampling method, especially जब बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लंबा नहीं है या बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, थोड़ा सा है, तो वो भी सैम्पलिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट जितना क्वांटिटेटिव में इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव. Okay, so now I would like to call upon Srijani of MA first year, Vasanta College, Rajghat, to deliver the vote of thanks. Srijani, are you there? Please unmute yourself. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Thank you, Richa ma'am. So with this, we come to the end of the session, of today's session. Dr. Kamalpreet Kaur Sohi ma'am, thank you so much for taking out some time of your very busy schedule and go through all the sampling techniques and processes and explaining so beautifully with us. You were very patient with all the questions that we had asked you. And the best part that I felt was that there are some common mistakes that we make when we use some research methodology terms, such as, how you explain the confusion between arbitrary sampling and randomized sampling. That is something we students make. It's a very common error that we make. So thank you so much for clarifying that. I think after this session, none of the students who have attended this session will make another mistake or like this anymore. So thank you, ma'am. It has been a great help, and we would love to have you again sometime in another workshop. And with that, I would like to thank the director of the workshop, Dr. Seema Srivastav ma'am, the conveners of this workshop, Dr. Meenakshi Bajpai ma'am and Richa ma'am, Dr. Richa Singh ma'am, and the entire organization committee, whose constant effort, this entire initiative that all the teachers have taken to, make this event a grand success. So thank you so much for giving us this opportunity for learning from such great speakers. And lastly, I would like to thank all the students for participating. I'm sure you're enjoying this as much as I am doing. And I'd love to see you guys again for the entire week. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. It was an honor from my side as well. I had a great time. Thank you, everyone. Thank you, Kamalpreet ma'am. Thank you, Meenakshi ma'am. Such a great opportunity you gave me. I really had a very lovely time. I don't even realize this time just flew by. It was great. Thank you so much. I also thoroughly enjoyed and revised everything. Actually, I was there in the college running here and there. And that my principal also took a bit of your
session, she also said कि हमने कहा देखिए ma'am, it is going on, so it happens with us, but definitely ma'am, thank you so much once again from my side as well. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Okay, ma'am. Take care. All the Thank you best, so everyone. much once again. Thank you. Thank you. Thank you, Richam. Thank you. I request all the participants to please send today's attendance and feedback also. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. But I